हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। हाउ इज एवरीवन भाई, सब लोग कैसा चल रहा है? आई नो क्रेजी 48 आवर्स हुए ऑफ कोर्स आफ्टर द एल क्लासिको, तो भाई मैं सोचा भाई लेट्स टेक अ लिटिल बिट ब्रेक। पर्सनली स्पीकिंग पीपल भाई, आई एम नॉट टू वेल, तो एक्सक्यूज मी थोड़ा बहुत भाई, कॉट अ बैड कोल्ड। और ऑफ कोर्स हैप्पी संक्रांति, हैप्पी पोंगल फॉर एवरीवन हु हैड सेलिब्रेटेड यस्टरडे। लेकिन यहाँ मेरे एरिया में ऑलरेडी यार देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, सो देयर माइट बी सम मतलब पता नहीं, कुछ डिस्टर्बेंस बोल दो या माइक की आवाज आ रही, क्योंकि कुछ फंक्शन चल रहा है उसका अभी भी। लेकिन ग्रेट टू बी बैक बिकॉज देयर इज अ लॉट टू बी डिस्कस्ड। तो मैं सोचा था भाई शुड आई जस्ट पुट अप अ वीडियो, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज टू बी डिस्कस्ड। बट उससे भी पहले भाई देयर इज ब्रेकिंग न्यूज लास्ट फ्यू आवर्स में, सबको पता ही है अभी तक होपफुली। ऑफ कोर्स जोसे मोरिन्यो अनफॉर्चुनेटली इज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम एस रोमा। मतलब हम बात करेंगे हाउ इज इट फेयर, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स मतलब चेल्सी फैंस विल बी ईगरली हियर होपफुली, बट व्हाट अबाउट द ट्रांसफर? सम ब्रेकिंग न्यूज वहां पर भी हो रहा है, बट come on, the best awards, मतलब really should we call them the best awards anymore? मतलब we have to speak as much as the goats are the goats। लेकिन भाई सब लोग अगेन बिग अप टू एवरीवन, जो भी लोग जुड़े सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी, सब लोग लेट्स हिट दैट लाइक बटन। आपको पता है व्हाट्स द ड्रिल, वी आर टारगेटिंग व्हाट 150 लाइक्स फॉर द स्ट्रीम। कम ऑन लेट्स इजीली गेट देयर। नमन इन द हाउस बोल रहे एनी डे जोसे ओवर पॉच, इज इट अ क्वेश्चन इवन? अगर हम कंपेयर कर रहे हैं प्रॉब्ली नॉट, लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू ब्रेक इट डाउन नमन, इसलिए हम लाइव है, वी हैव टू डिस्कस विद यू ऑल। हर्षित इन द हाउस बोल रहे गेटिंग कार्लो बैक वाज द बेस्ट डिसीजन माय पापा पेरेज took from Everton, we should get Jose back ASAP। Similarly, Ramit obviously says Jose Mourinho, Jose Mourinho, Jose Mourinho, Jose Mourinho, you know the drill। और by the way, with all due respect to my fellow मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, हम आप पर भी आएंगे फॉर श्योर। देयर इज सम ब्रेकिंग ट्रांसफर न्यूज वहां पर भी, एंड टू सम एक्सटेंट स्पर्स फैंस इफ एनी, भाई बिग अप टू यू ऑल। लेकिन सोशल मीडिया अगेन, सोशल मीडिया पर सब नहीं चाहिए। आई नो चेल्सी में भी इट्स नॉट रियलिस्टिक पॉसिबली, लेकिन फॉर ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस एंड द स्पर्स फैंस सेइंग, स्पर्स फैंस तो अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि दे आर डूइंग वेल विद एंज, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर सेइंग इन सोशल मीडिया, सम ऑफ देम एटलीस्ट, by get Jose back। What do you mean by get Jose back? Jose का first option क्या है भाई? Obviously given a choice he loves Chelsea to the core, और अगर given a choice pretty sure वो चेल्सी ही लेगा। एंड चेल्सी पर ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, बाईबैक क्लॉज बोलते हैं ना, मतलब फर्स्ट नो ऑप्शन बोलने का जो हक है ना वो चेल्सी को है। लेट्स बी रियल अबाउट दैट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रदर्स देयर। श्रेयस इन द हाउस, लाफ्टर क्लब इन द हाउस एज वेल। बिल्कुल श्रेयस ज्यादा नहीं फॉलो करते बाकी टीम्स का, लेकिन स्कोर देखते इधर उधर। फॉर श्योर विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट टुमारो एज मच एज पॉसिबल। अगेन अमित थैंक्स, यस नॉट टू वेल थोड़ा बहुत, बट इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ जब ब्रेकिंग न्यूज होता है तो एज इट इज भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वहीं पर यहाँ है। नहीं होगा अंकित भाई, जनरल प्रसाद तो बोल रहे हो। अब यू नो व्हाट, मुझे गंदी वाली फीलिंग आ रही थी जैसे लास्ट टाइम जोसे मोरिन्यो टू स्पर्स हुआ था, आफ्टर जोसे मोरिन्यो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑफ कोर्स 2 स्टिंट्स एट चेल्सी। फॉर ऑल वी नो, हमें सब पता है जोसे मोरिन्यो का एक घर है लंदन में, पीपल डू नो। मतलब आई नो ही कॉल्ड आर्सेन वेंगर समथिंग इन द पास्ट, एंड विल कम टू सम फेमस कोट्स ऑफ जोसे, और थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया मोड में भी जाएंगे व्हाई वी एक्चुअली बिलीव दैट कभी कभी ना पीपल हैव अ डिफरेंट सेंस अबाउट जोसे मोरिन्यो जस्ट बिकॉज ही मैनेज्ड some big clubs, but he has also managed the say mid-sized clubs or just above that as well, to be very honest। तो we'll be looking at that। लेकिन क्योंकि घर लंदन में है एक, और बिकॉज ही हैज एन अटैचमेंट टू इंग्लैंड, यू नेवर नो। मतलब घोर कलयुग, आर्सेनल नहीं यार वो नहीं हो रहा। आर्टेटा अभी के लिए तो है, लेकिन आई डोंट थिंक इज एवर गोइंग टू आर्सेनल। जोसे मोरिन्यो बैक टू द ब्रिज, सू बोल रहे पुदेन इन द हाउस, व्हाट्स अप। Middlesbrough match is the last opportunity to save the job for Poch, लेकिन will it be too late for Chelsea to sack? क्योंकि जनवरी विंडो का लिटरली 5 दिन भी बाकी नहीं रहेंगे मैन सिटी फैन, that's the whole point। Snail coming back to the awards, ये awards Mo Maya awards never exist for me for a while। Again we have to rename the awards guys। I know nothing against the players, they are the goats, and I know उनको हम blame नहीं कर सकते as much as like it has to be questioned, लेकिन रियली भाई द बेस्ट अवार्ड्स हैव टू बी भाई
Ghante ke awards is what basically the name should be. It should be Ghante ke awards, or I would say the worst awards in terms of not the worst players getting it, but the worst judgment that always happens. Awards has been popularity contest for a long time, as Baba Nedibhai said. Bilkul, bilkul, they are right, absolutely. Jose deserve a final of Carabao Cup, if you know what I mean. अर्षद, ये तो भाई मुझे याद ही नहीं है बिल्कुल. स्पर्स फैंस कुछ है बोलने के लिए वहां पर. जस्ट सेइंग, आई नो डैडी लिव्स टू प्ले वहां पर. देवेश इंदाउस, व्हाट्सअप. Jose is a done manager. Never go back to your ex. Lavanya बोल रहे भाई. With all due respect, we have gone back once and that was proven right. मैं यहाँ पर सिंपल सा बोलता हूँ. चलो भाई, जोसे मुरिन्यो से शुरू करते हैं. विल कम टू द बेस्ट अवार्ड्स एंड द ट्रांसफर्स एंड ऑल. हम बहुत बार बात करेंगे फॉर श्योर आज. अगेन, जो भी लोग आए, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. आई विल ट्राई एंड टेक एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल. नहीं तो आपको पता ही है व्हाट्स द ड्रिल. लेकिन भाई, ये मैं बोलता हूँ भाई, बहुत लोग बोल रहे हैं दैट जोसे इज अ डन मैनेजर. Jose has not kind of built the club or rather rebuilt the team from scratch. ये सब बोल रहे हैं. मतलब I get that. और of course, पहला चीज सबसे पहले ये हमें डिस्कस करना चाहिए, in my personal opinion, that did Roma did the right thing. मतलब first is that, and we'll come to Chelsea in a minute. लेकिन रोमा में, if you know, मतलब what I mean, you know, मैं क्यों बोला हूँ ये जो build क्लब फ्रॉम स्क्रैच, आपको बेसिकली वापस से रिडेम्पशन लाना क्लब के लिए. Has he not done that in AS Roma itself, Lavanya? With all due respect, मतलब I know, मतलब रोमा ने कुछ झंडे नहीं उखाड़े. एब्सोल्युटली मैं अग्री करता हूं वहां पर. लेकिन पीपल नो इट. इटालियन फुटबॉल फैन, मी बीइंग वन, ट्रस्ट मी, इटली में जनरली सेरिया में पैसे नहीं थे, बहुत वांदे थे. आई नो द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इज नॉट दैट compared to maybe the Premier League and La Liga, you can almost say that. लेकिन recent couple of years में even that has come good in my opinion. ये कोई जोक नहीं है that AC Milan, Inter Milan were there in the semi-finals of the Champions League last time. Napoli were in the quarter-finals last time. भाई ये it's not a coincidence. And Jose Mourinho भाई, I think 15-16 साल के बाद में रोमा के लिए एक मेजर ट्रॉफी जीता था. फर्स्ट यूरोपियन ट्रॉफी फॉर AS रोमा. मतलब that was a huge deal. 2 back-to-back years में 2 cup finals in Europe. I know it's just Conference League, but still, मतलब even Europa League बंदा था वहां. ठीक है, he almost won it. अब who knows, मतलब people are saying no, he's finished etc. Spurs में, I know Man City के against था that final that people are talking about Carabao Cup में few years ago. लेकिन let's be real, you never know. Jose Mourinho in a final is always a dangerous element. तो हम बोल सकते हैं कि he could have won Spurs that, you know, that trophy that they needed. रोमा के लिए जीता है यूरोपियन ट्रॉफी. एंड कितने रिसोर्सेज में यार, हार्डली एनी रिसोर्सेज. ही मतलब वो ही गॉट बैक अ फिनिश नेमानिया मार्टिच एंड गॉट हिम टू परफॉर्म लास्ट सीजन. आपको याद ही है. मतलब आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल्स. अच्छा, यहां पर वापस मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा. देखिए यार, 2012 की बात है. क्या हुआ था 2012 में? एवरीवन रिमेंबर 2012 में क्या हुआ था? ऑफ कोर्स चेल्सी वन द चैंपियंस लीग, राइट? That is what I would, of course, Man City also won that, you know, that Aguero wala, you know, season. Of course, we remember that. लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से चेल्सी वन द चैंपियंस लीग 2012 में. और 2013 में मतलब ऑल ऑफ अ सडन all the people left. Champions League players, 80% of Chelsea खाली हो गई थी. If anyone is debating me, bring it on. 80% of Chelsea खाली हो गई थी. And then we had very popular or very talented youngsters by the Massacre, Mata, Oscar, Hazard. ठीक है, a lot of them had come into Chelsea. और लमाइनो, आप ब्लेम करोगे जोसे मोरिन्यो ने डिब्रोइनो को भेजा था, पर उस समय चेल्सी मेड मैसिव नंबर ऑफ साइनिंग्स, रिमेंबर दैट. अब कहीं ना कहीं ही डिडंट कम इमीडिएटली आफ्टर 2012. यहां पर वापस से आई एम जस्ट सेइंग, आई नो लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक ट्वाइस, हो सकता है, लेकिन ये जो क्रेडिट नहीं मिलता ना जोसे मोरिन्यो को, दैट्स इनकरेक्ट फॉर यू. बिकॉज 2012 में व्हेन चेल्सी वन द चैंपियंस लीग, हमने बहुत चेंजेस किए थे. यस, मे बी नॉट एज मच एज अभी बिकॉज ओनरशिप भी चेंज हुई है, आई गेट दैट टोटली. लेकिन देयर वाज स्टिल अ लॉट ऑफ चेंजेस. और इमीडिएटली नहीं आया था बंदा. ही केम आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स. ही केम इन एंड ऑफ 2013 to Chelsea after when Rafa Benitez ने हमें हराया था. And yes, as much as Rafa Benitez fans would say that come on bhai, he was a good manager etc. और उसका जोसे मोरिन्यो का 36 का आंकड़ा रहता था. जोसे मोरिन्यो himself as a manager rates him but not as a person. Having said that, Rafa Benitez ने सब उखाड़ दिया था चेल्सी का. कुछ वाइब नहीं था स्टैमफोर्ड ब्रिज में. बंदे ने अपने को क्लब वर्ल्ड कप हरा दिया था and what not bro. As in even the मतलब उसके पहले RDM
मतलब ही हैड अ चांस ऑफ सुपर कप विनिंग, वो भी हमने मिस कर दिया था। फिर राफा बेनिटेज आया था, क्लब वर्ल्ड कप हरा दिया था, कैराबो कप हरा दिया था सेमीफाइनल में अगेंस्ट स्वानसी। ठीक है, दैट इज व्हाट वे आई लुक एट इट, एंड वी हैड मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर जोजे आया था एंड ही सेटल्ड इट। हमने क्या किया, द लिटिल हॉर्स, एवरीवन रिमेंबर्स the little horse comment, the little horse takes some milk, grows and becomes a bigger horse, and that Jose did. भाई Jose जीता था 2015 में। I'm not saying it's going to repeat, लेकिन people do not give Jose credit for 2014-15 का season. Why, I don't know. He has rebuilt Chelsea to some extent in that phase, in my opinion. अगेन हम प्लेयर बाय प्लेयर भी डिस्कस करेंगे। न्यूकासल के चांसेस ज्यादा होंगे मुरीनियो को लेने आने के लिए, अगेन दैट इज द पॉसिबिलिटी, अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एडी हाउ से पहले भाई पॉच को सैक कर दो, अगर बाय चांस पॉच इज नॉट द आंसर, व्हिच एनीवे इज द मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सैक सैक सैक, मैं उसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन द रियलिटी इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ दैट पॉच गेट्स द सैक। आई नो दैट, क्योंकि मतलब आई माइट बी रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग चेल्सी के लिए, लेकिन द रियलिटी बीइंग मुझे वो लग रहा है, सिंपल एज दैट। Jose back to Chelsea just as you manifested, Ankit bhai. Manifestation to hai, bilkul Ayushman. Ankit bhai, bring Jose will be good for now. He can bring character in dressing room, which we require now. I respect Mourinho, but I would not take him because we have been sacking managers and suffering. Won't change anything. Vaibhav in the house, I am pouch out now that Jose's Mourinho is available. Om in the house, one of the OGs in the channel. Let's see. And again, Sumita will come to the transfer 100%. Again, if you know, you know. Then if you know, you know. Simple as that. और ज्यादा नहीं बोलेगा, समझदार को इशारा काफी है। रामित बोल रहे हैं ओबी मिकेल मेट टॉड बर्ली। एक सेकंड में I'll just take Abhinav in the house. Bhai Abhinav, welcome back to the fan, mere bhai. Big shout out to Abhinav to become a member again. People do check out our membership schemes. Always a fan channel for all to see. We try and do content as try and have a lot of competitions as well going forward. Anthony Marshall in the house. Wow, nice to see bhai. बात करेंगे आपके ट्रांसफर के बारे में, क्या हो रहा है वहां पर। I feel like Jose can do something to this Chelsea team. He can provide what has been missing here. मतलब will he bring a sense of calmness? सबसे बड़ा चीज क्या बोलूं ना, पुदिन ने एक पॉइंट बोला है, मतलब anyone here thinks that, एक सेकेंड भाई, 70 people watching, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, we should have, and we are live for the last 13 minutes, we should have literally 100 likes right now. Come on, we can easily get there, guys. Just a press of a button. We are lucky Jose wasn't sacked before the Champions League final instead of Carabao Cup. We would have been cooked hard. Oh बाप रे. As Roma, Mourinho से पहले 7 to 10 times, ठीक है, Mourinho ये नहीं करवा पाए, पता नहीं, not sure. Lord Prince Superstar, I'm not understanding the message. कोई नहीं, respect to you. It's a lazy take that Jose can't work with youth and build. He's fucking the special one. Respect. बिल्कुल. Ramit, people forget. I know some superstars बने थे from that Porto team. I know उस बात को भाई literally 20 साल हो गए. आप बोलोगे यार 20 साल पहले की बात क्यों उठा रहे हैं अंकित यार? भाई Pep Guardiola, who got the best award by the way, and he deserved it absolutely. जब पेप ग्वार्डियोला कर सकता है 2010 में, तो और वापस से 2024 में, मतलब जोजे कोई मतलब ऐसा कोई है वही नहीं है भाई। जोसे मोरिनियो इज द स्पेशल वन फॉर अ रीजन, एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई अभी राइट नाउ चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर पीपल हु आर सेइंग कि भाई बंदा नहीं वर्क कर सकता विद अ यंगिश टीम, बंदा नहीं कर सकता रीबिल्ड ऑफ अ टीम। नो डिसएग्री बिग टाइम भाई। यंगिश टैलेंटेड बंच पोर्टो में थी 2003-04 यूएफा कप उस समय हुआ करता था भाई, पीपल नो दैट, यूरोपा लीग हुआ करता था। देन द चैंपियंस लीग विद पोर्टो by beating Manchester United. People remember that absolutely, don't they? And then with that young team came to Chelsea. Chelsea कौन सा भाई, I know बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ था। यहां पर देखे a Roma team which had not won 15 साल तक कोई भी यूरोपियन ट्रॉफी, and rather no trophy at all, and no European trophy in the history. That team को भाई with less resources आपने वहां पर दिलाया है, with resources at Todd Boehly etc, with the Chelsea money etc, plus already talented players जो Chelsea में है। अगर आप उनको एज अ इंटरिम भी लाते हो ना, वर्स्ट केस में, मैं फिर भी बोलता हूं विल डू बेटर देन पॉच ब्रो, दैट्स अ रियलिटी, बट वेदर इट्स एन आंसर वो टाइम विल टेल। लेकिन आप जो कर दिखाया है वो उसके आगे आपके पास है रिसोर्सेस। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया बंदे ने। इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड में बोलता हूं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आई थिंक हिम एंड लुई वैन गाल, मैं बार बार बोलता हूं दैट आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम दिया जा सकता था, इन माय पर्सनल ओपिनियन। आई जेन्युइनली बिलीव दैट, बट अगेन इट्स नॉट माय प्रॉब्लम दैट वन। जनरल टोसाड, नाइस टू नो दैट। कुछ भी देखिए यार, ऐसा होता है ना सुरेंद्र, द सैक्ड वन बोलोगे आप, ठीक है भाई, ठीक है, बंदा बेसिकली क्या, रिमेंबर दिस,
Remember this? दिखाएंगे हम, दिखाएंगे. You exactly know what I'm saying. If I'm being very honest, मतलब जोसे मोरिन्यो भाई बंदा इतना सारा जीता है और फिर भी आप बोल रहे हो सैक्ड वन. मतलब आई नो, banter aside, but the reality is that he's one of the 5 best managers of all time, and no one can deny that. No one can deny that. 5 best club managers of all time, in my opinion. Ethan in the house, क्या हाल है भाई Ethan? Many are saying that Jose didn't do well with Roma. He made them with a trophy in 11 years and then took him to Europa Final 2. The main players are Lukaku and Dybala, who remain injured every time. But हाँ, मतलब again a lot of injuries से deal किए थे. Plus भाई he got back a few players. I remember यहाँ पे आर्सेनल वाला बंदा आया था, क्या नाम है उसका बंदा जो आर्टेटा को पसंद नहीं था. He went there, and then there was obviously Wijnaldum who went there. Then there is of course injury prone. मतलब again a certain Portuguese, you know that, मतलब Renato Sanchez. Then मतलब टैमी एब्राहम की इंजरी की बात कर लो, डिबाला की बात कर लो. यस, वो जोसे वाज पार्ट ऑफ द कॉल कि क्यों हमने खरीदा वो, या क्यों हमने लोन पे दिया कुछ प्लेयर्स. बट दैट इज व्हाट दे डिडंट हैव द रिसोर्सेज टू ब्रिंग द फिट एंड बेस्ट प्लेयर्स. सिंपल एज दैट. आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा. अगेन आई नो 3-1 लॉस के बाद आया है मिलान के अगेंस्ट, बट इन माय ओपिनियन इट इज हार्श, इन सिंपली पुट. Om, thanks, man. We can always grow more. The big question is if owners will take someone like Mourinho. That is a big question, of course. देखो, owners को समझ आ जाना चाहिए that basically speaking, that जो project कर रहे हैं ना with all youngsters etc. and we'll come to transfers. कहीं ना कहीं you have to agree that मतलब एक pulling power भी चाहिए आपको. मतलब अभी भी as much as Chelsea 9th आ गई है and we'll come to other teams, लेकिन 9th भी आ गई है ना, फिर भी सच में बोलिए, टच योर हार्ट एंड टेल मी, इफ बाय चांस चेल्सी को चैंपियंस लीग तो खैर मिलेगा ही नहीं नेक्स्ट सीजन, लेकिन बाय चांस यूरोपा लीग भी नहीं मिले, बाय चांस कॉन्फ्रेंस लीग भी नहीं मिले, चलो कॉन्फ्रेंस लीग चलो मिल गया, फिर भी आप बोलोगे हैज पोचेटिनो हैव मोर पुलिंग पावर देन जोसे मोरिन्यो? मतलब अगर स्पेशली अगर यूरोपियन फुटबॉल नहीं है ना, जोसे मोरिन्यो इज डेफिनेटली, मैं बोलूंगा भाई, इफ आई एम टॉड बर्ली राइट नाउ, आई एम मेकिंग कॉल टू जोसे मोरिन्यो. जोसे, sorry, I know it's not the right time. Commiseration for you to lose the Roma job. You did a great job. You got them trophies just like you did at all your clubs, except for a certain club, with all due respect, which was not won trophies. Then you basically know what to do. Just wait for a couple of months. देखते, we still believe that Poch is the answer, but you have your home here. Chelsea is your home. You know that. You know the club inside out. आप basically, this can be a big challenge. लोग बोल रहे हैं ना भाई, ये challenge उसने लिया नहीं है Jose Mourinho. Maybe that's a challenge that he's looking for himself. मतलब from his perspective भी सोचिए भाई, अगर मतलब he is one of the GOAT managers, he has the right to select that. Just say again, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी लाओ. मैं बोल रहा था that maybe अगर Pochettino would have already lost the last couple of games, then definitely Pochettino would have been out. लेकिन the realistic aspect है कि सुनने में आ रहा है that Pochettino will be Chelsea manager at least for the next couple of months. फिर देखा जाएगा. लेकिन मैं बोलता हूँ जोसे मोरिन्यो को रुकिए जरा, कोई जल्दबाजी मत करिए इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग नेक्स्ट स्टिंट. जोसे स्टिल ग्रेट, बट आप एक सवाल का जवाब दे दो बस. व्हाई डिड बर्ली एक्सेप्ट ऑथोरिटेटिव फिगर लाइक जोसे? बर्ली ओनली केयर्स ऑन अबाउट प्रॉफिट एंड नीड्स, यस मैन, ही नीड्स दैट स्नेल, बट कहीं ना कहीं इवन रोमन डिड दैट इन 2013 व्हेन ही गॉट बैक जोसे मोरिन्यो. 2007 में जब जोसे मोरिन्यो गया था, आई क्राइड ब्रो, आई क्राइड, आई ट्रस्ट मी, आई क्राइड, एंड आई रिमेंबर दैट डे लाइक एनीथिंग. और वो एक क्लियर था कि जोसे मोरिन्यो डिड नॉट वांट अ शेवचेंको कमिंग टू द क्लब. ऑलरेडी हैड ड्रॉगबा, ऑल्दो शेवचेंको इज वन ऑफ माय गोट्स एज वेल, लेकिन द रियलिटी बीइंग दैट उस समय जरूरत नहीं थी चेल्सी को, और वो चीज था. रोमन वांटेड अ यस मैन टू सम एक्सटेंट इनडायरेक्टली, लेकिन वो जोसे तैयार नहीं था, और वो ईगो क्लैश हो गया एंड ही वेंट अवे. ठीक है, बट 6 साल बाद में हुआ ना, मतलब रीयूनियन हुआ ना, थिंग्स हैपन. मतलब आई नो थॉमस टुकल माइट बी अवेलेबल टिल द समर गाइस, लेकिन एक चीज है डेफिनेटली, ये चीज बोलिए, मतलब you wait till the summer, you have options of Thomas Tuchel and Jose Mourinho open. Obviously, मतलब in that case, I agree that I will go with Thomas Tuchel right now because of present day of football, or more recent Thomas Tuchel देखा है success with Chelsea, but Jose is love bro. Let's be real. मैं नहीं बोल रहा कि भाई just go for him, but ये जो narrative चल रहा ना कि Jose cannot work with egoistic owners at all, Jose cannot work with youngsters, Jose cannot rebuild the club, it's all bullshit. Let's be very real. मैंने यहाँ पर facts दिया है about Porto, about Chelsea part 2 and AS Roma as well, and Roman first part भाई कहीं ना कहीं वो भी dominant था to some extent.
हर्षा इन द हाउस, क्या बात है. अगेन पार्क द बस इज ऑल्सो अ नैरेटिव इन माय पर्सनल ओपिनियन. जनरल तुषार, बिग अप टू यू. लेकिन मुझे लगता है दैट क्लियरली जोसे मोरिन्यो, अगेन आई वाज लकी इनफ टू वॉच एवरी सेकंड ऑफ जोसे मोरिन्यो लाइव व्हेन ही वाज, जब चेल्सी का फर्स्ट स्टेंट में मैनेजर था, और नॉट जस्ट दैट पोर्टो में मैनेजर था, और नॉट जस्ट दैट व्हेन रियल मैड्रिड में मैनेजर था. मतलब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, रियल मैड्रिड फैंस एंड विल कम टू यू व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट अवार्ड, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, as much as Real Madrid ने dominate किया था that mid to late 2010 10s ना, जो हुआ था few years back, that multiple Champions League back to back under Zidane and Ancelotti, भाई जो हुआ था, that basically is obviously goated stuff, ठीक है. लेकिन in terms of pure football, Real Madrid played the best football भाई under Jose Mourinho, played the best football. प्राइम बार्सिलोना का हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं फुटबॉल का बेस्ट एवर टीम, आई नो मैन सिटी के बारे में आएंगे हम, लेकिन प्राइम बार्सिलोना हम हमेशा बोलते हैं, दैट इज द टर्म. Jose Mourinho was the guy who was able to beat that prime Barcelona to some extent. He was the guy भाई, और वो भी not just with boring football भाई, मतलब some great counter attacking football which is part of football. And first stint of Chelsea में भाई 4-3-3, I cannot forget that man. 4-4-3-3 was absolutely brilliant that Jose Mourinho played. Barcelona Chelsea 2004-5 का Champions League, anyone watched that match? If anyone tells me that is boring football, park the bus. Sorry boss, sorry. I know काफी साल हो गए रियल मैड्रिड और चेल्सी के फर्स्ट स्टिंट्स में, लेकिन द फैक्ट इज इफ जोसे मोरिन्यो हैज देम प्लेयर्स ही कैन प्ले. मैं तो बोलता हूं इवन 2015 में एनीवन रिमेंबर्स द एवर्टन अवे गेम, चेल्सी वर्सेस एवर्टन? हाउ कैन पीपल फॉरगेट भाई? नोवेयर क्लोज टू पार्क द बस इफ ही हैज द प्लेयर्स. हाँ, रोमा में ही डिडंट हैव दोस प्लेयर्स, दैट इज व्हाई ही प्लेड अ सर्टेन वे, ठीक है, दैट इज द फैक्ट, रिमेंबर दैट. सेम थिंग विद स्पर्स पैसा कहां खर्चती थी भाई डैनियल लेवी के अंदर, जस्ट सेइंग. I don't think many managers, elite ones, take risks like Jose does, joining teams like struggling United, Spurs, etc. Brilliant, man. Random. I love that comment. Random comment, but great comment. देखो भाई, if I speak, I'll be in trouble. Jose के पास है BALLS, if you know what I mean. He has BALLS and बंदा substitute भी करता है. He can substitute a substitute. He can substitute person in the first half an hour. He has that, and when which many very less people have. कहीं ना कहीं बहुत narrative चलता है भाई जोसे मोरिन्यो का, PR नेगेटिव PR चलता है. आई एम हियर टू करेक्ट इट, दैट्स मी, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई हैव सीन हिम इन माय राइवल के क्लब में, आई हैव सीन हिम इन माय क्लब अ कपल ऑफ टाइम्स, एंड आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग. आई नो मेनी ऑफ यू आल्सो नो. Jose to Newcastle is possible, but want him at Chelsea. टॉड बोलिए मोरिन्यो नहीं जमेगा. अगेन अगर रोमन अपना बेसिकली नो ईगो खा सकता है, तो टॉड बोली किस खेत की मूली भाई, किस खेत की मूली है टॉड बोली. The talent is in Chelsea is immense. They only need the winning mentality. Who better than Joseph for it? एक आते random. We'll come back to the best awards as well. Vaibhav यहाँ बोल रहे हैं भैया, an unpopular opinion, but I feel that Pep would have never won a trophy with the current Roma side. He has always managed the best sides with the best players, unlike Jose. Well, again, Vaibhav मैंने बोल दिया. If I speak, I'll be in trouble. But Pep is also a goat. Remember that. Absolutely है. मतलब in fact इस साल अगर Man City का जीता वापस Premier League, तो भाई I have to say that he's probably the goat in England. He might go one above Alex Ferguson in my personal books. अगर इस साल जीता, लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते the fact that I think Jose has tested him more compared to Pep. मतलब कहीं ना कहीं I know people might say that ये एक hater आ गया. नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, सिंपल एज न्यूट्रल मैं एग्जांपल देता हूँ, एंड विल कम टू मेसी एंड द बेस्ट अवार्ड्स एज वेल. लेकिन वही लोग बोलते हैं भाई रोनाल्डो टेस्ट हिमसेल्फ मोर कंपेयर्ड टू मेसी. मतलब मेसी कैन ही डू ऑन अ कोल्ड रेनी मंडे नाइट मिडनाइट फुटबॉल स्टोक, मतलब वो वाला चीज जो है ना, वो रोनाल्डो कर सकता है वर्सेस वही है कैन बेसिकली पेप डू दैट. वो आई डोंट नो, मतलब ये कहीं ना कहीं हम स्पेकुलेट कर सकते हैं वैभव, ये अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, बट द रियलिटी इज एटलीस्ट गिव क्रेडिट टू जोसे मोरिन्यो, जब बंदा रखता है भाई जज्बा, सिंपल एज दैट. एक सेकेंड. सुरेंद्र कुछ भी. Jose is one of my favorite managers. I'd rate him best after Saf. I don't think he's done. He's far from done. भाई वैसा आपको नहीं लगता कि whenever team struggles, a lot of manager gets the whole blame our players, और players को कोई ज्यादा नहीं कहता? What do you think and what about others? आप भी बताओ भाई. बिल्कुल players are to blame. भाई मैं सिंपल सा बोलूं, a person like Jose Mourinho, Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, भाई ये जो बंदे हैं ना, मतलब टू सम एक्सटेंट मैं बोलता हूँ लुई वैन गाल एंड यप हाइंकस एंड ऑफ द लाइक्स एज वेल, आर्सेन वेंगर, ये जो 7-8 है ना, एज मच एज आर्सेन वेंगर आई नो जोसे फैंस वुड से भाई अदरवाइज, लेकिन जो 7-8 मैनेजर्स है ना, मतलब दे आर लाइक, मतलब इवन दैट लेवल, मतलब हम क्लब फुटबॉल की बात कर रहे हैं पहले,
तो आप अगर ड्रेसिंग रूम में हो ना, आपके प्लेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स विल बी अट्रैक्टेड टू कम टू यू, सेकेंडली द प्लेयर्स अपना 100% देंगे ही. मतलब आई नो 2016 में जोजे गॉट अस ऑलमोस्ट टू रेलेगेशन आफ्टर विनिंग अ लीग, आई गेट दैट, लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट चेल्सी एंड अ डिफरेंट जोजे. अच्छा, यहां पर everyone, कोई भी दूध का धुला नहीं है, everyone has had their faults, by the best of the best managers have very low spells, लेकिन अगेन एंड अगेन ही राइजेस अप. और बार बार, मतलब व्हाई डू यू थिंक गाइस, व्हाई डू यू थिंक जो भी लोन पर लाए रोमा पर, जो भी लोग प्लेयर्स है, व्हाई डू यू थिंक टैमी अब्राहम वाज कन्विंस्ड टू काइंड ऑफ स्टे इन रोमा? Jose Mourinho, simple as that. Why do you think Dybala, despite a less release clause, why clubs have not been able to pull him around? Maybe because Jose Mourinho. Why do you think Wijnaldum वहां पर गया था? Jose Mourinho. भाई, a lot of reasons है वहां पर. It might be little reasons, but it's important. जो डगआउट में ना आपको रेस्पेक्ट आपको आती, तो आप यू वांट टू प्ले फॉर दैट, दैट्स वन ऑफ द एम्बिशंस. कोई भी फुटबॉलर के लिए सिंपल फंडा क्या है कि भाई आपको जीत पहले खेलना है, देन हमें जीतना है एज मेनी ट्रॉफीज एज पॉसिबल, एंड वी हैव टू प्ले फॉर द बेस्ट क्लब्स एंड फॉर द बेस्ट मैनेजर्स. जोसे मोरिन्यो इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट, जस्ट लेटिंग यू नो. Only one thing is confirmed, one of trophy are confirmed if Jose comes to Chelsea. Wow, absolutely भाई. सपने में देखा है भाई, सपने में देखा है. Burley can give the signings Mourinho wants, but will he get together with Burley considering his history with Tuchel? I don't know, लेकिन it's worth trying. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे भी हग रहे हैं. हाँ, अगर बेसिकली हम लास्ट 2 मैचेस भी हारते, तब तो मैं बोलता हूँ श्योरिटी अभी साइन करो, राइट नाउ, अभी भाई चेकबुक भेजो और साइन करो जोसे मोरिन्यो को. लेकिन बिकॉज वी हैव काइंड ऑफ डन डिसेंट इन लास्ट कपल ऑफ वीक, वी हैव सडनली बिकम 9th, हम हैं अभी भी टेक्निकली इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द कैराबाओ कप. आई कैन सी व्हाई पॉच विल बी रिमेनिंग. लेकिन अगर हम हारते हैं सेकंड लेग नेक्स्ट वीक, व्हिच इज बेसिकली मिड वीक नेक्स्ट, तो भाई ही इज गॉन, सिंपल एज दैट, ही इज गॉन, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. Ancelotti was at Everton before Real Madrid. Fair enough. Exactly. That is the whole point. Will Burley and Mourinho work together? Yes, वापस ले था. Jose is looking like going to Saudi. Throughout the year talks positive about Saudi. Yes, लेकिन उसने बोला था रोमा को when Saudi approached him. Remember that, मेरे भाई. People don't realize, Ramit बोल रहे, if we don't win, there will be lesser revenue and impact to the brand. Exactly. Brand. भाई, Poch is not एकदम मतलब ऐसे तुच्छ मैनेजर नहीं है, लेकिन जोसे मोरिन्यो he helps to the brand as well. Plus the fact that एक कप मेंटालिटी रखता है बंदा, तो for me that is important क्योंकि that's part of the revenue. Pull of players, again jersey selling, वो भी मैटर करता है definitely. Jose has hinted at going for a national team, possibly England, or going to manage a Saudi Pro League club. Yeah, he will do that. लेकिन मुझे अभी भी लगता है one last dance is pending में. मुझे ऐसा लगता है अगेन, इससे पहले कि भाई for all we know घोर कलयुग में आर्सेनल जाकर ले ले, क्योंकि आर्टेटा, let's be real, is not going to meet expectations this season is what I am guessing. Let's be serious. अगर वो होता है तो I can see at the end of the season Arteta getting the sack after वो लोग भी बहुत स्पेंड किए, तो आई सी बोथ ऑफ देम गेटिंग द सैक, एंड दैट्स व्हाई आई एम वांटिंग दैट वी काइंड ऑफ are open to a Tuchel or Jose back, in my personal opinion. Jose is old school. He might expect players to work hard, Clifford in the house, and he should, but it's a trait that is fading away from young players. Clifford, fair point, that absolutely fair point है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ that अभी ना unfortunately हम जो 18 महीने किए ना, कहीं we have lost that little bit of identity that we created in the last decade, and in fact more. तो वो चीज हमें वापस से लाना है. वो कैसा आएगा? By again winning. That winning matters. Winning, भाई टूकल का इंटरव्यू आपने देखा होगा. Tuchel is basically someone who clearly said that yes, trust the process. हम भी करते थे, लेकिन after going back from Chelsea, उसका इंटरव्यू आया तो उसमें बोला था बंदा कि clearly in England especially it's all about results, and इसने बोला है that England में he is respected. So if he is respected, भाई Jose will be respected next level in my opinion. बिल्कुल 2012 laid the stone for future success of Real Madrid, instill mentality. भाई वही है, if I speak I'll be in trouble भाई. Real Madrid Barcelona El Clasico शुरू हो जाएगा चैट में. Today ETH Javi Poch hasn't got any identity and they are being backed by owners, but Jose has done so much till people are disregarding him. Thanks for people are saying that. Ramit uttering facts यहाँ पर. By Nathan in the house, trophy Mourinho back at the bridge. Well, there's a high possibility in my opinion. अगर टूकल और जोसे मोरिन्यो अवेलेबल होते हैं come the summer, and till then we decide to sack Poch, is quite possible. Then I believe अगर हम फिर भी नहीं जा रहे for one of them two, it is भाई, it is just Todd Bully out there. Directly मैं बोलता हूँ.
Even as a United fan, Jose did whatever he could for us, except for a shitty ownership to ruin things. Exactly my point. By go for Mourinho, but question is, will he accept most of the players in the current squad? Chalo, मैं squad के बारे में बात करें. Swap, thanks for letting me know. By the way, half an hour into the stream, great to have a lot of people watching us. हम लोग यहाँ पर the best awards पर भी आएंगे. We'll break down and थोड़ा बहुत funny conversation वहाँ पर है. Do not go away. और of course lot of transfer news. लेकिन भाई जो भी यहाँ पर है ना, ये बोलिए, ये जो प्लेयर्स की हो रहे हैं ना, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट विल दीस प्लेयर्स मैच Mourinho स्टाइल. व्हाट इज Mourinho स्टाइल? पीपल टेल मी व्हाट इज जोसे Mourinho स्टाइल? जोसे Mourinho मतलब हम एसोसिएट करते हैं जोसे Mourinho विद मे बी गेटिंग ऑन जॉन ओबी मिकेल. ठीक है, जॉन ओबी मिकेल को लाता है एट अ सर्टेन पॉइंट, फेलाइनी को लाता है एट अ सर्टेन पॉइंट. दैट इज व्हाट वी एसोसिएट हिम. व्हाई? बिकॉज दैट काइंड ऑफ बिकेम अ रील. व्हाई? बिकॉज तब सोशल मीडिया शुरू हुआ था. लेकिन फॉर ऑल वी नो भाई, जोसे Mourinho मतलब इवन टू सम एक्सटेंट मैं बोलता हूँ चेल्सी सेकंड स्टिंट में भी 2015 की बात हो रही है. 2015 की बात हो रही है भाई. वी प्लेड सम ब्रिलियंट मैचेस. वहां पर क्या क्या था 2015 में? पीपल रिमेंबर व्हाट डिड ही डू 2014 समर में? यू नो व्हाट वाज द साइनिंग दैट जोसे Mourinho मेड? 2014 जनवरी में ही गॉट नेमानिया माटिच बैक टू चेल्सी. ठीक है, नेमानिया माटिच वाज व्हाट? अ टॉल लैंकी फिगर who kind of helps protect that defense as well as had a great range of passing. That is Nemanja Matic hai. ठीक है, brilliant signing, one of the signings of all January windows in my opinion. 2014 में जनवरी में, 2014 में समर में he got what? Diego Costa and Cesc Fabregas. इस करंट स्क्वाड में आते हैं. चलो भाई, will this compare? Swap. Big up to you and everyone else यहाँ पर. Again, Navjot in the house, one of the OGs of the channel. भाई 2014 में जो किया था मैं कंपेयर कर रहा हूं. सेस फैब्रेगास का इक्विवेलेंट कौन है इस करंट चेल्सी स्क्वाड में? एनीवन इन द चैट? हु इज सेस फैब्रेगास इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ द क्लोजेस्ट प्लेयर हु कुड बिकम द सेस फैब्रेगास फॉर चेल्सी इन दैट सेम सिस्टम? चलो मैं चेंज भी नहीं कर रहा. और आई डोंट थिंक वी वर प्लेइंग 3 एट द बैक अंडर जोसे Mourinho इन 2015. रिमेंबर दैट गाइस? वी वर नॉट प्लेइंग. हम लोग खेल रहे थे 4-2-3-1. ठीक है, वी हैड सेस फैब्रेगास, वी हैड लाइक एन ऑस्कर. ठीक है, वी हैड अ नेमानिया माटिच. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, ऑस्कर कौन है? ऑस्कर का रोल कौन खेलेगा? ऑस्कर का रोल खेलेगा यस कॉनर गैलेगर. यस, ऑस्कर ज्यादा टैलेंटेड था, ऑस्कर के पास बढ़िया टेक्निक था, स्किल्स था एब्सोल्युटली. गैलेगर has improved in the last 6 months. Gallagher has the level of pressing, in fact arguably better than Oscar of that. हाँ, खाली pressing में. In terms of other things, Oscar obviously was a better player. I'm not going to say that Oscar से better Gallagher है. लेकिन what I'm saying is, वो जो role है Oscar का in that cam, in terms of high pressing, winning the ball, tackling, that is what Gallagher could get. और मैं stat दिखाता हूँ guys. मैं यहाँ पर एक stat दिखाता हूँ. Again, मैं I am ready with some data as well for people who are not seeing it. Again, थोड़ा लंबा stream हो सकता है, but we're discussing a lot of things here. ये याद रखिए that कहीं ना कहीं there is a stat which is not lying. अंडर पॉच एज वेल, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट पॉच को भी दे देते हैं फॉर अ चेंज. और सेस फैब्रेगास का रोल ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट एंजो फर्नांडिस. ठीक है, एंजो फर्नांडिस हैज दैट एबिलिटी. मैं हमेशा कंपेयर किया हूं. चेल्सी हैव वन द पोजीशन इन द अटैकिंग थर्ड मोस्ट टाइम्स देन एनी अदर टीम इन यूरोप्स टॉप 5 लीग्स दिस सीजन. व्हाई? Because of Poch ball to some extent, but because of Gallagher. Gallagher is that guy who wins that position in the attacking third. लेकिन यहाँ नवजोत बोल रहे he's getting fired in 4 months. I don't want a manager who has a pragmatic approach, underperform with Roma. You can't win leagues with such a dead football in today's Premier League. Again, cannot compare both the squad. मेरे भाई नवजोत, simple as that. एक second. Everyone like the stream? Yes, absolutely. देवेश बोल रहे. We'll come to that as well, Jace. We'll come to that, by the way. I did see your tweet as well. Jose asks for players which he wants, but Burley won't give. No, to be honest, it's a four window transfer strategy Chelsea का, just so people know. हाँ, first 2 में हम ज़्यादा signings किए थे. Last 2 में basically the idea is to sign just 1 or 2 players. लेकिन for me, मतलब ऐसा नहीं कि यार Jose Mourinho always just goes for signings. No यार, मतलब इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे. मैं वापस बोल रहा हूँ, 2014 में वी डिड नॉट मेक मेनी साइनिंग्स. वी जस्ट मेड 3 मेजर साइनिंग्स. डीडियर ड्रॉगबा केम बैक, ठीक है, टू चेल्सी. दैट वाज वन जो स्क्वाड के लिए हेल्प किया था. लॉयक रेमी केम, पीपल नो दैट. तो वो स्क्वाड प्लेयर्स थे, डीडियर ड्रॉगबा एंड लॉयक रेमी. बट इट वाज मेनली डिएगो कोस्टा एंड आई बिलीव इट वाज व्हाट Cesc Fabregas एंड जनवरी में नेमानिया माटिच. और आई थिंक फिलिपे लुइस डिड कम, लेकिन वो एनीवे स्क्वाड प्लेयर बन गया क्योंकि एस्पिलिक्वेटा बना था लेफ्ट बैक. अगेन जावी सैकिंग बोल रहे भाई बार्सिलोना तो नहीं जा रहा, वो तो पक्की बात है. as much as he was in Barcelona, for people who do not know, with Pep all those years ago, as an assistant.
Jose to replace Javi, nahi Bipen, I don't think so. Other than Chelsea, which is a realistic destination of Jose Mourinho, I genuinely believe that England is a destination. I genuinely do. Again, ये घोर कलयुग है. आर्सेनल कभी जाएगा नहीं. I know that, जैसे मैंने बोला, बार्सिलोना वापस नहीं जाएगा, लेकिन in my personal opinion that अगर स्पर्स गया तो भाई who knows who knows. लेकिन हाँ, let's see. काउंटर अटैकिंग फुटबॉल एब्सोल्युटली भाई बिल्कुल. एंजो इज द गाय, जैसे आप लोग बोल रहे हो. ऑस्कर इज कचरा, एग्जैक्टली भाई. डिएगो कॉस्टा नहीं है. अब डिएगो कॉस्टा नहीं है, ठीक है, फेयर इनफ. Diego Costa का element, who can play that? Again, someone who can kind of drift off the left, someone who could basically play up front, and who has that winning mentality and goals. मतलब Nkunku is not like for like, लेकिन again एक बड़ा साइन तो आएगा भाई in the summer. I know Victor Osimhen is still भाई, मतलब dreams come true वाला मामला होगा कहीं ना कहीं. But remember, अभी जॉन बी मिकेल basically speaking to him and vice versa. तो हो सकता है with Jose coming, all of a sudden अगर हमारे पास खाली यूरोपा लीग फुटबॉल है, you never know, Victor Osimhen might just be pulled because Jose Mourinho had dug out में. That's a slight difference. Remember, a Serie A manager also he was in the recent past, right? लेकिन हाँ, मतलब these are certain things जो हम बोल रहे हैं. लेकिन talking about Serie A भाई, De Rossi has been named the new Roma coach, so all the best to him. De Rossi भाई, people highly underrated midfielder from yesteryears, लेकिन मेरे लिए one of the most loyal players आप कभी भी ढूंढ सकते हो. Daniel De Rossi is that for Roma, तो I think it kind of fits the bill. De Rossi actually अच्छा करेगा hopefully, और vibes भी लाता है जैसे जोसे मोरिन्यो लाता है. So again, मतलब we can discuss, we can go on and on about it, but simple facts being, मैं यहाँ पर मैं कुछ जोसे के special moments मैंने collate किया guys. Again we are coming to the transfer news and the best award, but सब लोग बोलिए भाई चैट में, which is the moment we are talking about. I know कहीं ना कहीं सपने मत दिखाई वाला सीन चल रहा है विद मी स्पेशली, दैट जोसे वाला वाइब्स बैक वाला चीज. लेकिन दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन चेल्सीज हिस्ट्री ब्रो. जो लोग को पता नहीं है, दिस वाज द फर्स्ट ट्रॉफी दैट चेल्सी वन व्हेन रोमन वाज एट द क्लब, और अंडर जोसे मोरिन्यो दैट मेंटालिटी, दैट कैराबाओ कप, उस समय कार्लिंग कप हुआ करता था. एंड इफ यू नो, we are already in the Carabao Cup semis, just saying. Of course, this was another glorious moment. चेल्सी को जिताया था 50 साल बाद में एक लीग टाइटल भाई, जोसे मोरिन्यो. एंड ऑफ कोर्स Roman helped, for sure the players helped, but it was Jose Mourinho's mentality which made Lampard the level of player that he eventually became. Gudjonsen, for that matter, who's played for Barcelona as well. Remember that. William Gallas, Makelele, John Terry, of course, of the likes. माइकल एसिन लिटरली उसको डैड बुलाता है भाई, एंड फॉर रीजन. डीडियर ड्रॉग्बा, पीपल हु डू नॉट नो, डीडियर ड्रॉग्बा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था भाई. जो लोग बोल रहे हैं ना यंगस्टर्स के साथ काम नहीं किया है भाई, ही वाज अ so called expensive signing who came to Chelsea and थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट कराता था चेल्सी फैंस को in terms of falling down, थोड़े सा टच हुआ और गिर जाता था बंदा. Jose Mourinho changed his mentality, use your body to your advantage. That was Jose Mourinho. Iron Robin भाई, सब लोग जानते हैं मेरा one of the goats Iron Robin. मतलब yes, बंदा छोड़ा था चेल्सी को after injuries, fair enough, लेकिन Jose Mourinho that 4-3 system using Iron Robin, Duff and Joe Cole as that X factor. मतलब पीपल के नॉट से ही वाज एनीवेयर क्लोज टू बोरिंग. इवन 2015 में जैसे मैंने बोला भाई, द मैजिकार 2013 में जब आया था, द मैजिकार, माटा फर्स्ट, देन ऑस्कर एंड हजार्ड वर देयर फॉर श्योर. लेकिन अगेन दिस वाज अ ग्रेट मोमेंट इन इटसेल्फ. आर्सेनल के साथ हमने जीता था ये वाला, कार्डिफ में था ये वाला मैच. जॉन टेरी लिटरली वाज किक्ड बाय डियाबी, एंड जोसे मोरिन्यो बेसिकली 2 back-to-back league titles, and then third season में he got this as well. Of course, the first Wembley, new Wembley का crown went to Jose Mourinho's Chelsea bro. Again, big up to Manchester United, लेकिन ये extra time में गया था. Not a great 90 minutes to watch, लेकिन extra time was something else. और वहां पर that motivation, extra motivation आपको जब चाहिए extra time में, that Jose Mourinho has that vibe to give you, और वो दिया था. Drogba scored that great 1-2 with Lampard. I remember एक winner in the new Wembley, the first time that FA Cup हम जीते थे new Wembley, or rather anyone won. Of course, मतलब this was again back to Chelsea. हम बोल रहे हैं मतलब someone who revitalized John Terry का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था guys, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था. अगेन वी कैन टॉक अबाउट, मे बी आई नो आप बोलोगे यार अभी जॉन टेरी टाइप कोई नहीं है टीम में. भाई थियागो सिल्वा का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है.
अब for all we know, Thiago Silva does not have a new contract offer. अगर Jose Mourinho comes in, just saying ifs and buts है, लेकिन अगर होता है तो maybe he gets tempted for one more year. कि भाई I want to play under Jose Mourinho. Come on, bro. My career will be complete अगर Thiago Silva plays under Jose Mourinho in Chelsea. You never know. John Terry, Rafa Benitez ने उसको मतलब cast out कर दिया था totally, and he got him back. And of course, other things we have already discussed. Getting back Didier Drogba. And winning us the league title again, very underrated achievement ये मेरे लिए. This is one moment जो मुझे याद है that Blackburn के साथ हुआ था, एक बड़ा great fight. Jose Mourinho भाई with the crowd जो connect रखता है ना with those fights and basically just on the sidelines. Even Roma fans will say that भाई next level. भाई last week Roma fans were singing Jose Mourinho, and for reason. Of course, भाई people who do not know what happened is, again I'm coming to the comments, लेकिन आर्सेनल ना, मतलब हम आएंगे आर्सेनल पर और भी, लेकिन आर्सेनल अप अंटिल जोसे मोरिन्यो केम, ठीक है, आर्सेनल लिटरली चेल्सी को बुली किया करती थी. आर्सेनल ऑलवेज गॉट द बेटर ऑफ चेल्सी. जोसे मोरिन्यो टर्न द टेबल्स, एंड हाउ मतलब एक विनिंग मेंटालिटी लाया, जो ऑफ कोर्स ड्रॉगबास गोल्स हेल्प्ड एब्सोल्युटली, लेकिन John Terry became the highest scoring defender ever in the Premier League under Jose Mourinho. Not spoken about enough. This match, I'm telling you, why people say that Chelsea has been boring or Jose Mourinho was boring. Bhai, again, बहुत साल पहले की बात है, I get that, but the fact is, given a chance, given the resources, he gets to some great football. This was one of the most memorable matches ever. Ronaldinho को standing ovation मिला था भाई at Stamford Bridge. That is what happened. A great goal by him. But Chelsea actually went through, were flying cards Barcelona. Of course, bhai, who remembers this match? भाई this is proper Jose vibes. मैं खाली इसके लिए वापस लूंगा. Nothing against Liverpool. Everyone remembers. भाई the slip, Steven Gerrard slip, everyone remembers. और by the way, talking about Steven Gerrard, जो पहला कप जो जोसे मोरिन्यो ने जीता था वो चेल्सी, that was the cup जहां पर Steven Gerrard ने own goal मारा था. But he's a legend, absolutely just banter है. Having said that, this one, Liverpool were on course to win the title, और ये बंदा Thomas Callas, Jose Mourinho did not play with youngsters, right? Thomas Callas, yaar, where is he? Where was Thomas Callas? Anyone remember Thomas Callas? Thomas Callas played and बंदे ने जिताया भाई चेल्सी को 2-0. We cannot forget. मतलब that is Jose Mourinho for you. Of course, Fabregas and Shirley. You remember 2015 में जब हम लीग जीते थे, तब पहला, I know again आप लोग बोले why are you going to flashback, but it is all Jose Mourinho. बंदे ने 2003 में भी किया था with Porto, 7 तक किया था चेल्सी फर्स्ट स्टिंट, एंड देन अगेन 2014 में फर्स्ट मैच, आई रिमेंबर हिज सेकंड सीजन इन द सेकंड स्टिंट इन चेल्सी था अगेंस्ट बर्नली, and that particular match में we went behind. Cesc Fabregas and Shirley combined to create one of the goals of all time for Chelsea, guys. Directly बोलता हूँ, one of the goals of all time. And but yes, Jose Mourinho is boring. Yes, simple as that. Everton match मैंने बोला ये 6-3 था. Correct me if I'm wrong. The score line crazy 6-3 or crazy score line था 5-3 or something like that. Crazy away game था. It was a second match of the season जहाँ तक मुझे याद है. भाई Jose Mourinho is boring. Yes, bring it on, man. Of course, who can forget? Bhai, again, does Poch give you the vibes of anyone close to Jose on the sidelines? Not even a competition. Not even a competition. Arsene Wenger, a legendary manager, ko banda bhai le raha tha eye to eye. And some of the quotes. I have top players and I'm sorry, we have a top manager. Please do not call me arrogant because I say it's true. I'm European champion. I'm not out of the bottle. I think I'm a special one. In the supermarket, you have class 1, 2 or class 3 eggs, and some are more expensive than others and some give you better omelets. So when the class 1 eggs are in Waitrose and you cannot go there, you have a problem. It's not important how we play. If you have a Ferrari and I have a small car, to beat you in a race, I have to break your wheel or put sugar in your tank. Exactly. Ange Postecoglou is playing some brilliant football in Tottenham. Lekin, did he win against Chelsea? When it matters, when you have to play dirty, did he do that? Jose can do both the things. जैसे यहाँ पर बोल रहा है. Everybody was waiting for Chelsea not to win every game, and one day when we lose, there will be a holiday in the country. But we are ready for that. Again, if I speak, I'll be in trouble. People know it. The title race in between two horses and a little horse, ये था 2013-14 में.
that needs milk and needs to learn how to jump, और next season हमें जिताया था absolutely. Again, Arsenal fans will not like me saying it, but you know what I mean exactly. बंदे में है दम, सिंपल सा बात है यार, बंदे में है दम. That is what I'm saying. Does anyone disagree? भाई again, a lot of debate हो सकता है, simple as that. लेकिन come on, you cannot just नकार के बाहर नहीं फेंक सकते कि Jose Mourinho is finished. मतलब even recently we have started the stream with, and even previously we have shown कि भाई क्या कर सकता है बंदा, better than Poch for sure. And let us not have him going to Arsenal. मुझे लगता है England is a choice. Aspi is better defensively than Walker. Defensively only, right? Yeah, fair point. Only defensively. Conte should be Roma coach next season. By Daniel De Rossi abhi tak hai. If he does well, I think he'll stay at Roma in my opinion, because he is one of the what Frank Lampard is to Chelsea is what Daniel De Rossi is to Roma. Just like Totti is to Roma, that is what John Terry is to Chelsea. Just saying. But anyway, चलो कोई नहीं, हमने जोजे के बारे में 45 मिनट्स बात की है. A lot of it हम we can agree to disagree, fair enough. I would still say that ideally क्या होना चाहिए था, that he should have been sacked when Chelsea lost the first leg against Middlesbrough उसी रात को, और हम अपॉइंट कर देते, that would have been the best. लेकिन अभी होगा नहीं, because last couple of matches we have done better in terms of results, और Poch is technically still there in the Carabao Cup. तो अगर हम हारते second leg, then bring him on. But लेकिन 5 दिन बाकी रहेगा for the transfer window, so I don't think anything matter वहां पर. But let's see again. Yeah, bhai, brilliant, Devesh, absolutely. Again, Etihad mein he's had some great games here, I must say that. But Pep and Jose ka vibes is something that we cannot forget. Lekin quickly guys, before we go on to the transfer news as well, thoda bahut we have to discuss that as well in terms of transfers, etc. Congratulations to all the Messi fans. Congratulations to Lionel Messi, and he'll remain a GOAT absolutely. यहाँ पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है कि लियोनेल मेसी should not have been the the GOAT of the last decade and a half along with a couple of others, absolutely. लेकिन again मतलब यहाँ पर कोई भी मेसी फैन भी मानता है that Messi should have got. I would ask the Messi fans, has even any Messi fan agreed to the fact that Messi should have got the best award? Anyone here? Is there a single person in the chat? I mean, is there a single person? Tell me who agrees that Messi should have got. Tell me clearly on the chat. Messi should have got the best award. Let me know in the chat. If anyone agrees here, by respect. If you do not agree, respect. Simple as that. क्योंकि आपका व्यू पॉइंट है. लेकिन यहाँ पर people who follow me on Twitter, follow us on Instagram, do know what is my thoughts वहां पर. Messi is a GOAT. He'll remain a GOAT. Absolutely. No two ways about it. जो किया है. लेकिन क्या होता ना, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ. देखो यार, एट सम पॉइंट ना, मतलब ये चीज इफ आई स्पीक आई एम इन ट्रबल वाला मामला है, मैं बहुत ही मतलब आई हैव टू बी केयरफुल एटसेट्रा. नहीं यार, मैं अपने मन में जो बोलता हूँ, एंड यस आई अगेन डिस्क्लेमर 4 बार देना पड़ता है बिकॉज वी आर डीलिंग विद मेसी फैंस. आई गेट दैट टोटली, एंड आई जेन्युइनली बिलीव ही इज वन ऑफ द गोट्स. एब्सोल्युटली. मैं बहुत बार बोला भी, अलॉन्ग विद रोनाल्डो, अलॉन्ग विद बेसिकली फॉर मी रोनाल्डिनियो, अलॉन्ग विद जिडान, अलॉन्ग विद जेटी, अलॉन्ग विद माल्डीनी. भाई मतलब उस लेवल का फुटबॉलर, मैराडोना, दैट लेवल ऑफ फुटबॉलर्स व्हाट वी आर टॉकिंग. ठीक है, द R9, that top 10 footballers of all time quite easily along with Pele etc, right? लेकिन the reality is that आप time and again, मैं वापस 2013 की बात कर रहा हूँ. I think 2013 में रोनाल्डो को दिया गया था बैलन डोर. मतलब I would stick out my neck and say that Robin के against robbery हुआ literally. Robin basically won Bayern Munich the Champions League the way he did, and what he went through the last 12 months. He had basically got robbed. You can say the same thing 2010 ka basically with Wesley Sneijder. Wesley Sneijder did crazy, of course, with the World Cup. You all know that, with being a Dutch fan. Wesley Sneijder got a treble with Inter Milan. Okay, same thing. You can also say Thomas Muller. You can say Neuer, Ribéry. In these couple of seasons आप बोल सकते हो भाई. even Iniesta, Barcelona player, भाई in the past has been robbed in my personal opinion. लेकिन nothing against Messi, Ronaldo and others. लेकिन क्या होता है ना, आप हर साल ना आप पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट करते हो ना, आपको चेंज करना पड़ेगा द वे दैट दीज अवार्ड्स आर गिवन. सो ऑब्वियसली प्लेयर्स दे रहे हैं, तो आपके फेलो प्लेयर्स आर गिविंग, सो ऑब्वियसली दैट्स अ बिग डील. तो आप वो रिस्पेक्ट करना चाहोगे, एब्सोल्युटली करना चाहोगे. आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग द प्लेयर्स एट ऑल यहाँ पर. लेकिन अगर वो लोग समझ नहीं रहे, प्लेयर्स डोंट केयर, आई डोंट केयर, मतलब उनके लिए बेसिकली हु इज द बेस्ट, इट्स कॉल्ड द बेस्ट अवार्ड ना. तो हु इज द बेस्ट इज मेसी ऑब्वियसली. ठीक है, लेकिन फिर आप बोलोगे भाई जिस प्रकार आप वोट ले रहे हो,
इज दैट इवन राइट? क्योंकि दे डोंट केयर रियली, डू दे केयर सो मच? नो, कहीं ना कहीं मतलब आधा तो वोट जाते हैं फॉर द नेशनल टीम कंपैट्रियट्स, आधे तो जाते हैं फॉर द क्लब टीममेट्स, और आधे जाते हैं ऑब्वियसली फॉर द गोट्स। तो जो एक्चुअल डिजर्विंग है उन लोग को क्या मिलता है? ठेंगा, ठेंगा मिलता है उनको, दैट्स द थिंग। आप देखो ब्रेक डाउन देखिए ना, दिस इज अ बिग जोक ब्रो, this is a big joke, the breakdown, and this is a very big joke, trust me on that, guys. JS Matthew in the house, bye, welcome to Almighty Fam. JS Matthew, I don't know if you are part of ABFC members group, aap agar nahi ho to please message me on Instagram or Twitter. Apne contact information are always below the bottom line of the description, mere bhai. Let's have you join there as well. Big up to you. This is so-called awards are worthless now. Absolutely. Lot of people who are DMing me, भैया आपने कल कवर कैसे नहीं किया? आप हर साल करते हो लास्ट 3 साल से। क्योंकि मुझे पता था क्या होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स मी, ऑनेस्टली दैट्स मी। आई नो आई वाजंट वेरी वेल आल्सो, बट दैट्स अ फैक्ट। नहीं, मेसी को ब्लेम नहीं कर सकते, मैं ये बोल रहा हूँ ना, मेसी को ब्लेम करना इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाट आई एम सेइंग इज, कहीं ना कहीं दीज अवार्ड्स आर गोइंग अगेंस्ट द, मतलब जो एक शान जो मेसी बोलते हैं ना, मेसी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड विल रिमेन। लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट, एक मतलब अगर 100 करोड़ लोग हैं दुनिया में, तो 100 करोड़ में से एटलीस्ट 1 करोड़ लोग अब आज के दिन में ऐसे हो गए जो बोल रहे हैं कि यार मेसी हैज बॉट अवार्ड। वो सच नहीं है, आई डोंट अग्री विद दैट। लेकिन मेसी और रोनाल्डो दोनों का इतना बेसिकली इतने सारे अवार्ड दे रहे हैं ना दोनों को, कि भाई अब लगता है कि यार नो मैटर व्हाट दे आर गेटिंग इट, तो कहीं ना कहीं इट इज मतलब बाय डिफॉल्ट वाला मामला हो गया। आप जो वैल्यू देते हो ना फॉर द एक्चुअली डिजर्व, थोड़ा बहुत दैट टेक्स अवे द शीन। आई एम नॉट सेइंग दे डिजर्व इट, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर टू बी ब्लेम्ड, एब्सोल्युटली नॉट। द अदर प्लेयर्स जो वोट करे, आइदर दे आर टू बी ब्लेम्ड टू सम एक्सटेंट, लेकिन उनका भी जॉब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी पीपल हु एक्चुअली अंडरस्टैंड द रूल्स, एंड अगर नहीं समझ रहे, go with basically a proper नो जूरी बीट फ्रॉम एवरी क्लब। लेकिन आप ऐसे समझाओ ना कि वर्ल्ड कप इंक्लूडेड नहीं था, सिंपल एज दैट। अवार्ड्स वर रिग्ड सिंस रॉबिन एंड नेमार गॉट रॉब्ड, बट अगेन रैंड्स के अलावा भी बहुत चीज करते हैं मेरे भाई, लेकिन बिग अप टू यू एज वेल। अंकित भैया, सम विन ट्रेबल्स एंड फीफा द बेस्ट, सम गेट सैक्ड बाय रोमा। नितेश क्या बोले यार? बेलिंगहम वाज द हेड ऑफ रॉड्री इन टीम ऑफ द ईयर, राहुल बोल रहे यस। व्हाट अबाउट मॉड्रिच? 2018 में रोनाल्डो का था, दैट वन आई एम नॉट टू श्योर मेरे भाई। आई वुड आल्सो से पीपल वुड लाफ एट मी, बट पीपल आई वुड जेन्युइनली बिलीव्ड इवन इन द ईयर जहां पर मेसी जीता था कंपेयर टू जॉर्जिनियो और कांटे, आई एक्चुअली बिलीव कि जॉर्जिनियो और कांटे डिजर्व्ड मोर। आप लोग हंस सकते हो एब्सोल्युटली, लेकिन मेसी डिजर्व्ड एटलीस्ट से 6 Ballon d'Ors out of the 8 Ballon d'Ors that he's got and 6 best awards, absolutely मुझे बोलना चाहिए। स्वरूप बोल रहे honestly अंकित भाई, I don't think Messi didn't deserve it this year because this year he basically did nothing and was in MLS, but at the end it's voted by players and coaches who are also fans. Exactly. आप अगर जाओगे ना, मतलब if people again, if the Ronaldo fanboys, if the Messi fanboys, if the Robin fanboys go to voting system, वो लोग obviously अपने player करेंगे। तो again you need to have people who are understanding the game from a long time or understanding the rules, जो part है in terms of administration भी। आप player हो तो आप you don't care about the rules etc, you're just going for the best player, simple as that, और आप जा रहे हो for your national compatriots etc। गोलकीपर में भाई ब्रेक डाउन करते गाइस, अगेन कंग्रेट्स बेसिकली फॉर फीफा वर्ल्ड 11 में टीबो कोटो को नाम दिया गया। द फनीएस्ट एस्पेक्ट क्या है बोलूं गोलकीपर में, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ जोक। हम आ रहे मिडफील्ड रॉड्री पर आ रहे स्पेशली, एंड ऑफ कोर्स स्ट्राइकर हालैंड पर आ रहे फॉर श्योर। भाई द फनीएस्ट पार्ट वाज गोलकीपर ऑफ द ईयर, ये तो वही हो गया मेंडी वाला सीजन जहां मेंडी को मिला था आई बिलीव पार्ट इन द बेस्ट 11, और फिर डोनारुमा को दिया था आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग द बेस्ट गोलकीपर, वही हो गया सेम चीज भाई। दे डोंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, क्या ही बोलूं। एडिसन, ये तो वोटिंग में भी कैसे बोल सकते हो भाई, एडिसन को मिला है आपको बेस्ट गोलकीपर, ठीक है, एंड प्रॉब्ली ही डिजर्व्ड इट, फेयर इनफ। लेकिन व्हाट अबाउट मार्क एंड्रे टर स्टेगन? What about Ter Stegen, guys? I think Barcelona, correct me if I'm wrong, Barca fans, big up to the season you had, भाई La Liga champion। सब लोग भूल जाते हैं, अभी बारसा हारी एल क्लासिको तो अब याद नहीं रहेगा सबको, याद दिला देता हूँ। बारसा इफ आई एम नॉट रॉन्ग खाली 19 गोल कंसीड की थी ला लीगा में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस, मैं देखा नहीं, आई एम नॉट लुक्ड इट अप, बट आई थिंक ओनली 19 goals they conceded in La Liga, bro. I know the back, center half, full backs obviously helped, लेकिन Ter Stegen, what about him? मतलब Ter Stegen is nowhere. Ederson was very close, absolutely great. Again, Man City players को actually they have been robbed to some extent. But मैं क्या ही तो बोलूं यार,
Hey Mudit in the house, bro. Mudit, welcome back to the fam, man. Always supporting the channel no matter what. Mudit, how you been? Long time no see though. I hope all is good, मेरे भाई. जेडारे बोल रहे हैं अब तो ये हाल है. थैंक्स फॉर सुपर चैट मेरे भाई. मेसी से कबड्डी खिला लो, वो भी बेस्ट प्लेयर ले आएगा. मेसी है असली भाई. If I speak, I'll be in trouble. जेडारे, honestly, again, nothing against Messi, but reality is, you know what? ये लोग भाई जस्ट टू हैव द रिकॉर्ड डन एक्सेट्रा. आई डोंट नो व्हाट पीपल आर सेइंग इट्स रिग्ड. आई डोंट बिलीव दैट. इट्स कहीं ना कहीं प्लेयर्स वो लोग केयर नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट हो रहा है. प्लस द फैक्ट दैट यू नॉट हैविंग इनफ पीपल हु आर सेइंग द रूल्स राइटली. आपको खाली डेट्स नहीं बताने थे प्लेयर्स को. अगर प्लेयर्स को एक ईमेल मिलती है, प्लीज वोट फॉर योर बेस्ट ऑफ 2023, इट शुड बी टोल्ड नोट इन बोल्ड लेटर्स द वर्ल्ड कप के नेक्स्ट दिन से शुरू होता है पीरियड. भाई विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू मेसी, पीपल डोंट गिव मी हेट. यहां पर मुझे मिलेगा, आई नो, बट मेसी इवन एट दिस एज जब हो जाएगा ना, तब भी उसको मिलेगा भाई, तब भी उसको मिलेगा. दैट इज व्हाट अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द पीपल आर थिंकिंग. अगेन 100 करोड़ में से 1 करोड़ लोग ऐसे सोच रहे, लेकिन वो क्यों सोच रहे? बिकॉज ऑफ दिस rubbish award, not because of Messi. Messi की कोई गलती नहीं है. Messi will remain a goat. लेकिन there are a certain set of people who believe कि because of all this, भाई, do they actually deserve all the years? They actually do. लेकिन sometimes they don't deserve. Both Ronaldo and Messi, not even मैं बोल रहा हूँ रोनाल्डो इज ऑल्सो, मतलब नॉट टू ब्लेम, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वापस से बोल रहा हूँ 2013 में रॉबिन, नॉयर, रिबेरी को नहीं मिलना was a robbery. Let's get it real. Again, Zedare, thanks. I recently only came to know about your channel. Your passion for Chelsea and super football and supreme. Will join the group. Keep growing. Bilkul, Jace Matthew. Why not? Why not? Absolutely. Again, we do a lot of content on Almighty Sports bhi. Forza Barca, would love to see some Messi fans ka comments यहाँ पर. Honestly, as a Messi fan, I don't care about these awards. हाँ, absolutely well said. You know what? Forza Barca, respect for saying that. लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना. एटलीस्ट पीपल और अदर प्लेयर्स हु केयर, उनका एक एम्बिशन रहेगा कि भाई हमें जीतना है दीस काइंड ऑफ अवार्ड्स. ऑल्दो द फर्स्ट थिंग एज अ फुटबॉलर इज हमें जीतना है द टीम प्राइज. आई गेट दैट. लेकिन मेसी के लिए तो भाई इट इज जस्ट अ फेदर इन द कैप. सिंपल एज, एक छोटा सा फेदर है इन अ ऑलरेडी फिल्ड कैप. मतलब रियली स्पीकिंग, स्पेशली व्हेन यू नो 10, मैं आई विल स्टिक माय नेक आउट एंड से दैट मेसी डिड नॉट इवन डिजर्व टू बी इन द बेस्ट 11 ऑफ द ईयर. And as much as उसने किया MLS में as well as for PSG, the reality is that it is a robbery. It is a robbery that आपने एक भी इंटर मिलान प्लेयर को नहीं डाला है या नापोली प्लेयर. आई एम नॉट सेइंग दोनों रहने चाहिए थे. नापोली और इंटर मिलान का क्या सीजन था, उसके बाद आपने एक भी प्लेयर को नहीं दिया. और मैं एसी मिलान का नाम भी नहीं ले रहा, यहाँ पर भूल गए बस सब लोग. इट इज सिंपल एज दैट. यू नो दैट रियल मैड्रिड, बार्सिलोना इज इक्वल टू बैलन डोर / द बेस्ट. लेट्स गेट दैट राइट. ठीक है. और मैन सिटी, आई नो दे हैव काइंड ऑफ ब्रोकन रिकॉर्ड. 6 प्लेयर्स इन द मेंस वर्ल्ड 11 रहे हैं. लेकिन आर दोज राइट पिक्स? नो, दे आर नॉट राइट पिक्स. They are not right picks, especially Stones being there compared to Rodri not being there. It's a robbery, literally robbery है भाई, literally robbery है my opinion. Again देखो, आप वोट देखो, मैं क्यों बार बार ये दिखा रहा हूँ. गोलकीपर में गौर से देखिए. मार्टिनेज had a great season with Aston Villa, absolutely. लेकिन did he have a better season at Aston Villa than what Ter Stegen had at Barcelona? Honestly. And क्यों मैं दिखा रहा हूँ वापस? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ प्लेयर्स जो वोट करे थे उनको पता ही था कि वर्ल्ड कप इंक्लूडेड नहीं है. वो एक्सप्लिसिटली बोला नहीं गया था. सिंपल एज दैट. आपको बोलना चाहिए क्लियरली. आप खाली डेट लिख दोगे 19 दिसंबर से है, तो भाई उनको क्या याद रहेगा 18 दिसंबर को वर्ल्ड कप फाइनल था? नो. सो यू नीड टू टेल. सो क्लियरली अगर गोलकीपर में मार्टिनेज इज अबव टर स्टेगन, मींस दे हैव वोटेड फॉर मार्टिनेज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप स्टिंट मोर. ठीक है, सिंपल एज दैट. एंड अगेन मतलब आई एम लिटिल बिट इवन सरप्राइज. मैं बोलूंगा एंजो फर्नांडिस इसमें मिडफील्डर्स की लिस्ट में है भी. आई एम लिटिल सरप्राइज एज मच एज ही हैड अ बेटर ईयर देन अदर्स इन चेल्सी. आई एम सरप्राइज विद दैट इटसेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम फॉर माय प्लेयर्स. मैं यहाँ पर एज ए न्यूट्रल आई एम टॉकिंग. यहाँ पर डेफिनेटली आई एम स्पीकिंग लाइक दैट. मतलब इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, यहाँ पर आई नो फीफा के अवार्ड्स है, आप चैंपियंस लीग, आप नेशंस लीग देखना चाहोगे, लेकिन रॉड्री तो नेशंस लीग भी जीता था. ठीक है, यूएफा टूर्नामेंट देखना चाहोगे, आई गेट दैट टू सम एक्सटेंट. लेकिन Fabian Schär, I would give a shout for him as well. To be honest, what a great season he had with Newcastle. Just think about it. Again, period of the awards क्या था? Last December से लेकर, वो भी mid December से लेकर इस August तक. What a season Fabian Schär had. Just saying. मतलब where are people like them?
I have no idea, bhai. I have no idea. Simple as that. Even in the striker category, मैं बोलता हूँ भाई Vinicius Junior, Messi, to be honest, did not have the superb, extraordinary season compared to basically what your Napoli or an Inter Milan player had, even to that extent. Kane for Spurs. That's the reality, guys. But again, क्या ही तो बोलूँ. If I speak, I'll be in trouble ज़्यादा. और जैसे ही मैं बोलना शुरू किया सच्चाई, facts, then it changes. Don't be surprised if Messi wins Ballon d'Or next season as well on basis of Copa America. कोई नहीं हम तो भाई बोलेंगे. World Cup winning manager is not eligible for best manager, but player is. Ooh, that's a point. लेकिन हाँ, talking about manager भाई, Pep Guardiola, definitely मैं बोलता हूँ he is in that category now. If he wins the Premier League, he will go down as one of the greatest ever. Not that he's already in the conversation. लेकिन भाई, what do City fans feel about it? I would love to know. कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला ने बोला that Barca is what made me. I'm here because of Barcelona. While I love City as well. कहीं ना कहीं बार्सिलोना को ट्रिब्यूट दिया है पेप गार्डियोला ने. I get the feel absolutely. मैं समझता हूँ, भावनाओं को समझता हूँ 100% पेप गार्डियोला का. But don't you all think that कहीं ना कहीं he could have avoided saying that at such a last stage, especially जब आपने ट्रेबल जीता है with City. I'm just saying that, just saying. क्योंकि एज थिंग स्टैंड राइट नाउ, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कल को अगर से फॉर एग्जांपल हम बात करें जोसे मोरिन्यो बैक की एट चेल्सी, all of a sudden he decides to go to some other club and say Arsenal and says that bhai Chelsea is what made me. Arsenal fans, what will they feel? You know what I mean? I know City और बारसा डायरेक्ट राइवल्स नहीं है कहीं ना कहीं, बट यूरोप में तो डायरेक्ट राइवल्स है ना इस बार. That's a fact, guys. In my personal opinion, kahin na kahin he could have avoided saying that. As much as I expect or I understand total respect for Barcelona, and he deserves, and they deserve it absolutely. Pep definitely deserved. Pep se aap koi nahi bol sakte ho ki he didn't deserve, as much as Scaloni was brilliant the previous year, but not this year, right? Schneider winning the treble and coming runner-up in World Cup doesn't even get him a Ballon d'Or. He said truth. He's from La Masia. Once a La Masia, always a La Masia. बिल्कुल. Again, वो कोई झूठ नहीं बोल रहा था. Absolutely, I get that. लेकिन मतलब अगर आप बोल रहे हो certain things, basically just a couple of sentences there in a season, वहां पर आप आपके क्लब के लिए कहीं ना कहीं, I think it's in my personal opinion unnecessary. Again, controversial है, लेकिन it's how I feel. I would like to clear here, Messi deserves the Ballon d'Or no matter how much you say otherwise. Regarding the FIFA best, maybe it's a tribute towards the GOAT. Yeah, हाँ, Ballon d'Or का मैंने इतना नहीं बोला था पुरता पारसा. You remember very well, if I can remind you. Ballon d'Or का Haaland was just unlucky, but Messi deserved it. You cannot question that. But right now, Messi did not deserve it. Simple as that. Again, Bellingham, great. He probably, हो सकता है आप बोलोगे Ballon d'Or, talking about that Forza Barca, Bellingham is the favorite for Ballon d'Or coming season के लिए. Absolutely. ठीक है, एज ऑफ नाउ एटलीस्ट. लेकिन भाई 7 महीने पहले, 8 महीने पहले, 9 महीने पहले बोल लो, एंजो फर्नांडिस ने पॉकेट किया था बेलिंगहम को भाई इन अ 2-leg डॉर्टमुंड के साथ. आपको याद है? पीपल रिमेंबर दैट. हम लोग इसी चैनल पर बात किए थे वहां पर. एंड ही डिड हैव अ गुड सीजन इन डॉर्टमुंड, लेकिन ही वाज नॉट लाइक समथिंग व्हिच वाज बेटर देन अ रॉड्री. नो सिंपल. मैं तो बोलता हूँ केडीबी आल्सो वाज बेटर. बीइंग ऑनेस्ट, हालैंड शुड बी दिस ईयर नॉट अ सिटी फैन. मैं बोलता हूँ हालैंड, रॉड्री, केडीबी किसको भी मिलता तो ओके होता, बिकॉज रिमेंबर केडीबी अप अंटिल अगस्त ही वाज प्लेइंग. ग्रीजमैन अगेन दिस सीजन का कमिंग सीजन के लिए यस, बट नॉट द प्रीवियस सीजन. Vinny deserved to be in team, but that Messi didn't deserve. By Abhishek, Vinicius also, I know that he had some great moments with Real Madrid in the Champions League, absolutely. लेकिन सच में बोलिए, टच योर हार्ट एंड से अभिषेक, मतलब डिड विनिशियस जूनियर was he more impactful, or did he do more for the club or generally in the entire period of जो 8-9 महीने की बात हो रही है, compared to what a Kvicha Kvaratskhelia did for Napoli? I'm just asking. मतलब I know Vinicius Junior is the better player even last year में, लेकिन in my opinion Kvicha Kvaratskhelia, Aussie man, यहाँ पर लोटारो मार्टिनेज भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन यू कैन आर्ग्यू, यहाँ पे बेलिंगम की बात हो रही थी, मैं तो बोलता हूँ इवन टू सम एक्सटेंट चालोनोग्लू इज अ ग्रेट सीजन गाइस. अचेरबी, बास्टोनी, डी मार्को, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखो चैंपियंस लीग फॉर विनिशियस जूनियर, देन इंटर मिलान डिजर्व मोर देन विनिशियस जूनियर. आई एम जस्ट आस्किंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग.
I won't say anything about Messi. फिर सारे मुझे रोनाल्डो फैन बोल देंगे. नहीं, you can say Matthew. Nothing against Messi, but against the decision आप बोल सकते हो. He was a player of the season in Bundesliga. Come on, भैया, you can't judge a player by one game, 1 minute motivation. That is an example, मेरे भाई. I hope आप being a OG user of a channel, you definitely know हम एक गेम के basis पर नहीं बोलते हैं. I don't expect this coming from you, मेरे भाई. Big up to you. लेकिन Jude Bellingham, trust me, there were a lot of times when you actually saw, हम follow भी करते हैं, हम cover भी किए थे Bundesliga last season मेरे भाई, along with a lot of other competitions. उसमें बोला था Jude Bellingham कहीं ना कहीं looking for a move. It's clear that body language is not the same as the previous season. लेकिन अगर हाँ, he was good. I'm not saying he was terrible, but what I'm saying is basically that there is an argument for other players to be better than him. That was just an example मेरे भाई. He was not the same what Jude Bellingham was. बैलन डोर अवार्ड में भी उसको जो दिया गया था यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, दैट वाज आल्सो रॉबरी इन माय ओपिनियन. Musiala should have been there in my personal opinion, but that's just me. Again, maybe even Kamavinga for all we know. How many Ballon d'Ors would you think Messi deserved to win? I think at least 6. I think definitely मैं बोलता हूँ. Again, Lautaro, great call, absolutely. मैं तो बोलता हूँ भाई, सेडिया को तो वो लोग पूरा नकार दिए भाई वोटिंग में, मैं क्या ही तो बोलूँ. बरेला last season, I would say Çalhanoğlu over Barella, just for last season. लेकिन Barella as a player, absolutely. Shikhar in the house, क्या हाल है? Jose to Chelsea, we have discussed in the first 45 minutes. A lot of being discussed. Being a Messi fan, it should have clearly been Haaland or KDB. Should have been close to Messi. Best 11 was enough. But what could Messi do? बिल्कुल उसकी गलती नहीं है. Absolutely, I agree there. Regarding Pep, I really like that he has forgotten his roots. He's not forgotten his roots. No matter how, yeah, बिल्कुल. Again, respect to Pep for doing that. What I'm saying is, अगर मेरा क्लब का मैनेजर वो बोलता, मतलब कहीं ना कहीं हमें पता है दैट इन द एंड ही विल गो देयर, हमें पता ही है, मतलब इन सम वे और द अदर. तो फॉर मी, व्हेन आप हर साल ट्रेबल नहीं जीतोगे फुर्ता बारसा. इफ यू आर अ सिटी फैन, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. भावनाओं को समझो. इफ यू आर ओनली अ मैन सिटी फैन who did not become a Man City fan just because Pep Guardiola went there, then I'm talking to you all, especially right now. Trust me, guys, you will not feel good about that statement being said at that stage. Simple as that. वो बोल सकता है in interviews, there are other things, but I believe that's what I would. ये मेरा point of view है, आपका point of view, I agree that you think that way. Fair enough. Bayer Leverkusen, why not, man? Jude is injured for 3 months in Dortmund at least. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब और भी reason why you don't give him, right? That those number of votes for last season. चलो कोई नहीं भाई. ये तो हम करते रहेंगे in terms of best 11 etc. lot of debate. Again, you can argue who should be there, who should not be there. लेकिन as things stand, जब से वो the best awards नाम दिया गया है, तब से Messi is leading that pack. So big up to him and Messi fans again. Again, such kind of goats, मतलब एक सेंचुरी में आते भाई Messi Ronaldo kind of people. I get that. लेकिन just because that hundreds of footballers के against आप मत जाओ, is what I'm saying. That's all I'm saying. ठीक है. लेकिन थोड़ा बहुत ट्रांसफर न्यूज पर आ जाते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पर 1 घंटा से ज्यादा हो गया भाई. 1 hour 8 minutes, guys. We have discussed a lot of it. No problem. Barca Universal, no meme and all. Nothing against him. I वो भी यार भाई देखिए यार, इतना मत जजमेंटल हुआ करिए यार with creators. There's a lot of effort which goes into doing this. There's a lot of guts which is required for someone, especially being a football fan in India from 25 plus years. Trust me, there's a lot of guts which requires for us to do this live. तो आप अगर बैक करो तो अच्छी बात है. हम यहाँ पर 10 बार बोल भी रहे कि he is a goat, he'll remain a goat, उसकी गलती नहीं है. तो nothing against Messi particularly. लेकिन because of this shit awards, bro, because of this shit awards, कहीं ना कहीं वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा शीन है ऑन मेसी रोनाल्डो ना, वो थोड़ा चल जाता है. क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट सेइंग दैट नहीं यार, नो मैटर व्हाट उनको प्रायोरिटी मिलता था, पॉपुलैरिटी मिलता था. दैट्स हाउ इट इज. ऋतिक इन द हाउस, क्या हाल है? बट विंटर ट्रांसफर विंडो भाई, ब्रेकिंग न्यूज. बेंजेमा और फिर्मिनो की बात करते क्विकली. अगेन अ लॉट ऑफ ट्रांसफर न्यूज में क्विकली मैं आई विल ट्राई एंड ब्रिंग लाइट टू दैट. लेकिन सबसे पहले बोलिए गाइस, चेल्सी, आई नो उड़ती उड़ती खबर ही है, आई नो बहुत सारे वेजेस है, आई नो कंसिडरिंग जो न्यूज आई अबाउट द मैनेजर एक्सेट्रा, इट मे और मे नॉट बी ट्रू. लेकिन चेल्सी ट्राई तो कर रही है भाई. व्हाट डू यू थिंक पीपल? वोट फॉर वन, नो ब्रेनर, बेंजेमा और फिर्मिनो चाहिए मुझे कमेंट में. अच्छा, बिफोर यू कमेंट थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर बोल देता हूं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं. दोनों के वेजेस बहुत हाई है.
ठीक है, और अगर ऑप्शन दो ही है यहाँ पर आपको, अगर चांस मिलता है, अगेन चांसेस कम है क्योंकि वेजेस बहुत हाई है, दोनों के वेजेस हाई है, बेंजेमा के वेजेस हायर है, ठीक है। यहां पर वी हैव फर्मिनो एज वेल, फर्मिनो इज 32 years old, बेंजेमा टर्न 36। बेंजेमा बेसिकली ट्रेनिंग पर नहीं गया है फॉर द लास्ट मंथ ऑलमोस्ट, ठीक है, वो प्रॉब्लम है। तो क्लियरली यहां पर प्ले डाउन कर रही है सऊदी मीडिया, लेकिन रियलिटी बीइंग दैट जो बेन जेकब्स ने बोला है दैट गिवन अ चॉइस ही एक्चुअली मे मेक अ मूव, लेकिन अभी तक रियलिस्टिक नहीं हो रहा है बिकॉज क्लब्स हैव नॉट मेड अ फॉर्मल अप्रोच, लेकिन दे आर कीपिंग टैब्स। 36 year old for a 5 month loan period on high wages, जो आपको पता है will anyway go back no matter what, और अब फर्मिनो अगर अच्छा कर देता है 5 months के लिए, there is a strong possibility considering he's just 32 that you might give an extension of a loan or sign him up later on. मतलब what would you go with? आप क्या चाहते हो, especially Chelsea fans and even न्यूट्रल्स, आप लोग बोलिए whom would you go with? Again the popular votes are Benzema, I see definitely Benzema है popular votes, there's no two ways about Benzema would be a killer with this Chelsea setup. Benzema I actually will go with Pramodani. मैं अगेन मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था, काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा था ट्वीट, फेयर इनफ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों आर ग्रेट प्लेयर्स, इनफैक्ट बेंजेमा इज ऑब्वियसली द ग्रेटर प्लेयर, बैलन डोर बहुत रिसेंटली जीता है, अभी भी ही हैज द फिजिकलिटी फॉर द प्रीमियर लीग, यू नो दैट, लेकिन द फैक्ट इज क्योंकि फर्मिनो नोज द प्रीमियर लीग सेटअप, प्रीमियर लीग एनवायरनमेंट, ही विल नॉट टेक इवन 1 month, अगर आप 5 महीने के लिए आ रहे हो, सोच के देखिए प्रमोदनी एंड एवरीवन हियर, जेस यहाँ पर बोल रहे हैं बेंजेमा, जो भी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं बेंजेमा, आप लोग सोच के देखिए, बेंजेमा ऐसे नहीं कि बहुत बेकार किया इन द सऊदी लीग, लेकिन हैज ही डन अ रोनाल्डो इन द सऊदी लीग? आई एम जस्ट आस्किंग, है ना, रोनाल्डो इज द गोट, आप उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो अंकित, आप बोलोगे, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हैज बेंजेमा मतलब रियली वाउड द सऊदी लीग? नो। और उसका रीजन मैं बोलता हूं क्यों। सऊदी लीग इज समथिंग दैट इज अ डिफरेंट कल्चर, आई नो बेंजेमा का कल्चर बहुत डिफरेंट है ऑन अ पर्सनल बेसिस, लेकिन इट्स अ डिफरेंट कल्चर, उसका क्या मोटिवेशन लेवल है एट 36 years of age, दैट आल्सो टेल्स यू, प्लस इट्स अ डिफरेंट लीग, हैज ही डन सो वेल? नो। सॉरी, फर्मिनो का भी आप सेम चीज बोलोगे, लेकिन फर्मिनो एटलीस्ट नोज द प्रीमियर लीग, यहां पर बेंजेमा आएगा प्रीमियर लीग में, तो आई डोंट थिंक दैट ही विल बी, मतलब श्योरिटी कि बंदा मिनट 1 से कर लेगा भाई, आई नो, मैं भी कंपेयर करने वाला हूं विद अ सर्टन फाल्काओ एंड अ सर्टन हिग्वाइन लोन ट्रांसफर, लेकिन लोन ट्रांसफर्स कितने बार चेल्सी के लिए चले, कोई भी क्लब के लिए, भाई वेगोर्स चाहता है ना, वेगोर्स और बेंजेमा और फाल्काओ आप सेम सेंटेंस में कैसे ले सकते हो, अंकित आप बोलोगे, लेकिन द रियलिटी इज दैट कोई भी लोन पर आता है ना, यू नीड टू हैव दैट एक, मतलब एक रीजन व्हाई डू यू थिंक दैट पर्सन विल गिव हिज बेस्ट, या तो आपका अपना फ्यूचर रिवाइव करने के लिए आता है, दैट इज द थिंग, थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली, या तो बंदा आता है अपना फ्यूचर रिवाइव करने के लिए, या तो आता है बेसिकली क्या बोलते हैं, मतलब potentially a loan to buy वाला ऑप्शन हो, तो looking at it basically that नहीं, I want to basically go into a new league and prove myself there and get a new deal, उसके लिए आता है, ठीक है, या तो आता है बंदा जस्ट फॉर नेशनल टीम में उसको मौका मिले नेशनल टीम में जाने के लिए, और दैट इज व्हाई द पर्सन कम्स ऑन अ लोन, क्योंकि उसको इतना गेम टाइम नहीं मिलता अदरवाइज, ठीक है, सिंपल एज दैट, और मे बी जस्ट बेसिकली हो सकता है द पुल फॉर द मैनेजर उस क्लब का, वो सब हो सकता है। अगर आप देखो ना, जो 4 चीजें मैंने बोली है, फिर्मिनो के लिए 3 चीज टिक मार्क है, Firmino is 32. It's not too late for him to get to Brazil team as well. Trust me on that. And Firmino is 32. He has Premier League experience, और कहीं ना कहीं एक होता है कि यार I love the Premier League atmosphere compared to where I am. Yes, बेंजेमा था ला लीगा में, वहां भी बेटर एटमोस्फियर, तो यू कैन आर्ग्यू, बट प्रीमियर लीग का एटमोस्फियर वाला नहीं था। अच्छा, नेशनल टीम के बारे में हम बोल रहे हैं, रिवाइव अ करियर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हेंडरसन के बारे में आया था दैट ही वांट्स टू रिवाइव हिज करियर अगेन, मतलब आई नो डिफिकल्ट, उसका बहुत इनॉर्मस वेजेस है, बट लेकिन फर्मिनो इज समवन जो अच्छा लिंकअप भी करता है, बंदे को मालूम है दैट अगर इंकुंकू शुरू करेगा, आई एम ओके टू बी ऑन द बेंच compared to Benzema. Will he be so okay to be on the bench? Think about those things. Simple as that. Um, Chelsea sign Benzema. Watch out, Chelsea fan kids. Let's see. For me, Firmino, Matthew भी बोल रहे हैं Firmino will not come. He still loves Liverpool FC. Bhai, 1 minute motivation. Big up to you. A lot of players. Timo Werner love Chelsea to the core, bro. मेरे भाई, won us the Champions League. He's gone to Spurs, man. That is football. Unfortunately, that's a fact. If you're saying that he will not come to Chelsea just because he loves Liverpool, I don't think that's a fact. वो Liverpool legend रहेगा.
एब्सोल्युटली रहेगा. जीरू लेफ्ट आर्सेनल एंड केम टू चेल्सी ब्रो. कहीं ना कहीं आप याद रखिए, देयर आर थिंग्स लाइक दैट व्हिच हैपन. ऑफ कोर्स फर्मिनो और लिवरपूल का इक्वेशन थोड़ा अलग है, बट कम ऑन, मतलब आर यू सेइंग मी दैट इट्स नेवर हैपेंड, सच थिंग्स हैव नेवर हैपेंड? ऐसा नहीं कि चेल्सी और लिवरपूल का राइवलरी एज इट्स लाइक अ रियल मैड्रिड बार्सिलोना राइवलरी, उतना नहीं है. तो आई थिंक वो चीज आएगी मन में, लेकिन if there's a good manager, if there's a chance he plays at least for a couple of months और अच्छा वेजेस भी मिल रहा है, अगर हम लोग कर सकते हैं, वो बिग इफ है, then why not is what I'm asking. अगर उसको एक चांस है to get back to the Brazil team, let's see. डिफेंसिव स्ट्राइकर है फर्मिनो. भाई फर्मिनो डिफेंसिव स्ट्राइकर कब से हो गया भाई? मतलब फर्मिनो इज नॉट अ बेंजेमा, ठीक है, लेकिन फर्मिनो मतलब वी मिस समवन हु कैन हिट द बॉल इन द बॉक्स. फर्मिनो इज वन फॉर श्योर नीतीश, 100%. लिंक अप प्ले में जैक्सन अच्छा है, बट फर्मिनो इज बेटर देन हिम. सिंपल एज दैट. आपको बेसिकली समवन हु बेसिकली हैज द एक्सपीरियंस टू बी इन द बॉक्स व्हेन इट मैटर्स, ही इज दैट. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बंदा आएगा 10 मैचेस में 20 गोल मार देगा, नो. What I'm saying is here, at least you have things which are better than what you have. Plus the fact that आपके पास एक possibility, अगर loan to buy हम करते हैं, say for instance, अगर उसको revive करना career, again big if, then you have something to look forward to. आपको एक कमिटमेंट मिल रही है कहीं ना कहीं, वो चाहिए. लीडरशिप एलिमेंट, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट बाय दैट नितेश इजीली, ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू कैन नॉट. Again, it's different than a Higuain or a Falcao was more similar to Benzema than a Firmino coming back. याद रखिए, this is someone who's actually won the Premier League. Yeah, but it's not too bad यार. Ritik, think about it. आपके पास फर्मिनो है, इधर साइड आपके पास एंकुंकू है, who could actually get in the box, and one side you have Modric. Why not? Sterling or Nkunku on either side. Why not? Chelsea will be suitable option for Benzema, absolutely. लेकिन I still have my doubts for a 5-month motivation. What will be the motivation for Karim Benzema to come to Chelsea? Only that thing मैं बोलता हूँ, nothing else. I want people who want to basically play for their careers, और basically I know professional है बंदा, absolutely respect to Benzema, Ballon d'Or winner recently, लेकिन there is a reason why he has not been the top level at Saudi. फर्मिनो भी नहीं रहा है, लेकिन he's 32. There's a difference. Plus Premier League experience. I repeat that. We have to pay about 130 million loan for Benzema for 5 months. He's on high wages, which is not good. Exactly. Enormous versus high. There's a difference. Firmino's side is showing more positives, but I have no problem with both. Exactly. I think that's the best answer. The Jace, मेरे ख्याल से. Benzema to United, Firmino to Chelsea, Sane to Liverpool. Oh, बाप रे. चलो भाई. Would you take Andreas Christensen back from Barca? Mercedes पूछ रहे. To be very honest, I would take him, despite बंदे ने at the lowest point of Chelsea decided to speak to Barcelona. It's not a great gesture, लेकिन considering वो Cobham में he has captained a few matches, I would say yes. And of course, Champions League final में people forget Christensen won the Champions League as well, भाई. People forget it absolutely. One OP in the chat, Surinder, मौके पे चौका मारते हुए. And to add one thing, Firmino has a lot of stake. He can be Brazil striker. Exactly my point. That is all my point is. Absolutely well said, Pramodri. I 100% agree with that comment. Again, मैं तो even if you remember, जो लोग OGs of the channel know that, हम लोग जब बात कर रहे थे when Firmino was moving to Saudi, उस समय भी बोल रहा था चेल्सी भाई जाओ फर्मिनो के लिए भाई, उसको हाई वेजेस दो, लेकिन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट दो, लेकिन लेट हिम कम. That is what we needed, the connect in forward line who has Premier League experience and who can score with the header. वो जो एस्पेक्ट नहीं है चेल्सी में. ब्रोजा इज नॉट अ ग्रेट हिटर ऑफ द बॉल, लेट्स बी रियल अबाउट इट. और अगर फर्मिनो आता है, ब्रोजा को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, लेकिन रियलिस्टिक नहीं लग रहा. बट क्विकली गाइस, थोड़ा और बात करेंगे हम लोग. चेल्सी का और भी स्टोरीज आ रहे हैं. आई थिंक ये एक टोटली ऑफ द ट्रैक है, लेकिन आई होप ये हो नहीं. टॉड बर्लियन को भाई कभी तो सीख जाओ यार, कभी तो सीख जाओ. एब्सोल्युटली भाई, यू नीड समवेयर टू लर्न. जॉन डूरन भाई, जॉन डूरन, लेफ्ट फुटेड स्ट्राइकर फ्रॉम एस्टन विला, जो एस्टन विला के शुरू नहीं करता भाई. ही हैज बीन लिंक्ड टू चेल्सी ऑन लोन. कोलंबियन इंटरनेशनल स्ट्राइकर है बाय द वे. आई डोंट अग्री विद दिस. देखो भाई, मैंने क्या बोला, लोन पे प्लेयर कब आता है? लोन पे प्लेयर आता है जब उसको मिनट्स नहीं मिलता. दैट इज द केस ऑफ जॉन डूरन. लेकिन हमें चाहिए एक्सपीरियंस स्ट्राइकर हु हैज नंबर्स बिहाइंड हिम. He doesn't have so many numbers behind him. So John Duran, as much as अच्छा player है, he is a tall striker who's not a bad header of the ball. लेकिन no, he's not a fit for me. 100% नहीं, मैं बोलता हूँ, आप लोग भी बोलिएगा. लेकिन टॉकिंग अबाउट स्ट्राइकर्स, आई बिलीव
मैनचेस्टर यूनाइटेड गिरासी के साथ और भी लिंक्स आ रहे हैं फॉर श्योर. हैविंग सेड दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड का पेलेस्ट्री सुनने में आ रहा है दैट देयर आर टीम्स इंटरेस्टेड इन पेलेस्ट्री. डियालो इज गुड इनफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. क्या बोलते हो कंसिडरिंग दैट गर्नाचो राइट साइड में खेल रहा है अभी. एंटनी इज कमिंग बैक आफ्टर इंजरी, सो पेलेस्ट्री विल बी लेट गो. I know that Hannibal also is let go, but let me know. Guys, do not spam, please. हाँ, मेसिनियो का भी आ रहा है, एब्सोल्युटली मेसिनियो पर भी आ रहा है. पेस्ट्री के बारे में बात करते हो, मेसिनियो समवन हु प्लेज बेसिकली ऑन द राइट साइड. विलियन उसका रियल नाम है. हाँ, एक सर्टेन रीजन वाज ऑलरेडी इन चेल्सी, बट मेसिनियो समवन जिसका रिलीज क्लॉज है एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू बी एक्टिवेटिंग दैट. लेट्स सी, अभी तो हुआ नहीं है, बट people are comparing it with Rodrigo of the likes. अब let's see if he becomes Rodrigo. अगर रियल मैड्रिड ने इन्वेस्ट किया तो व्हाई नॉट. विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो से कंपेयर कर रहे हैं. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, हाउ अबाउट दिस मैन हैनिबल. आप शायद एक क्लॉज भी डाले उसमें, चुपोमोटिंग ऑन लोन. यू नो व्हाट, I would take that given an option. I would take that 100% Rajvardhan. लेकिन is he a starter person? No. Yeah, John तो definitely is a big no, 100%. If your competitors are Jesus and Richarlison, Firmino legit has a chance. बिल्कुल. Surendra, thanks for seconding that. If you have option to choose between Havertz and Lukaku, who will you pick? Havertz. People will be shocked, but that's a true fact. क्योंकि मुझे चाहिए people who actually play for the club rather than play for their PR. As much as Lukaku का इतना बुरा साल नहीं रहा है, to be fair to him, but no, they can't disrespect the club. Absolutely no, 100% नहीं. लेकिन हाँ, और भी ट्रांसफर स्टोरीज है गाइस. यहाँ पर सुनने में आ रहा है दैट एवन फर्गसन भी चेल्सी वापस से, मतलब अगेन बिग प्राइस टैग, ब्राइटन के साथ बिजनेस नहीं करना है. थोड़ा और बाकी क्लब्स के बारे में बोले तो माइकल ओलिसे समर में व्हाट इज हैपनिंग इज मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, माइकल ओलिसे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द समर इज क्वाइट हाई लाइकली है. ऑल्दो वो पर्सनली पता नहीं क्यों बार बार न्यूज आ रही है दैट ही प्रेफर्स आर्सेनल. जब आर्सेनल में साका है, दैट व्हाई वुड यू गो देयर. तो माइकल ओलिसे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड विद वैन बिसाका गोइंग बैक टू क्रिस्टल पैलेस, इट्स अ पॉसिबिलिटी. तो वैन बिसाका प्लस कैश एंड नॉट अ डायरेक्ट 60 million ट्रांसफर, दिस इज क्वाइट लाइकली. सुनने में आ रहा है रैटक्लिफ हैज एक्चुअली गिवन द ग्रीन सिग्नल अभी उसके लिए फॉर द समर. अभी के लिए रैटक्लिफ एंड टीम बेसिकली वांट टू मेक वन बिग साइनिंग, ज्यादा नहीं करेंगे, वन बिग साइनिंग बाय द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो. और वो हो सकता है अगेन समर में आए बंदा. लेकिन द थिंग इज दे आर गोइंग फॉर टू यंगस्टर्स इन मिडफील्ड. वन इज जाओ नेवेस बेनफिका का, अगेन समय क्लोज टू 100 million रिलीज क्लॉज है उसका. और वर्मीरन जो है अपना रॉयल एंटवर्प का प्लेयर, उसका 50 million कॉस्ट होगा. 50 million फॉर वर्मीरन और जाओ नेवेस. These are two players who are proper defensive midfielders या central midfielders बोल दो. That is the news that Manchester United are planning to sanction that move, क्योंकि समर में maybe you will get rid of Casemiro. That is the news. लेकिन again they might sign early, but for the summer. Also और Manchester United का news आ रहा है that in terms of defenders, वरान का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होने की बात है. और दे आर गोइंग फॉर अनदर यंगस्टर इन सेंटर बैक हु इज बीन कॉल्ड द न्यू राफेल वरान. इज कॉल्ड लेनी यूरो गाइस. लेनी यूरो है बंदा, ये है लिल का सेंटर बैक, और जिस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं, लिवरपूल और रियल मैड्रिड और पीएसजी भी इंटरेस्टेड है. दैट इज वन टू वॉच अपार्ट फ्रॉम जॉन से टोडिबो, जिस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी दोनों इंटरेस्टेड है. रोनाल्ड अराओ की बात आ रही है. बार्सिलोना फैंस आप लोग बोलिए भाई. एल क्लासिको में आई नो रोनाल्ड अराओ कहीं ना कहीं टुक द रेड कार्ड, अननेसेसरी था वो. लेकिन अभी भी रोनाल्ड अराओ इज अ ग्रेट सेंटर बैक हु कैन प्ले एज अ राइट बैक. आई डोंट थिंक रोनाल्ड अराओ इज मूविंग एनीवेयर, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. मुझे नहीं लगता रोनाल्ड अराओ कहीं जाएगा. लेकिन सुनने में आ रहा है इफ देयर इज अ क्लब व्हिच इज विलिंग टू गिव नॉर्थ ऑफ 80 million पाउंड की बात हो रही है, सो अराउंड 90 million euros व्हिच इज ह्यूज मनी, देन दे माइट जस्ट गेट टेम्प्टेड. ऑल्दो मुझे लगता नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड रोनाल्ड अराओ definitely आएगा. Ronald Araujo, with all due respect to Manchester United, should be playing in a club which is playing Champions League football like a Delict. Delict or Ronald Araujo are two potential big moves, guys. Watch out. Watch this space. Right away नहीं बोल रहा हूँ, जनवरी में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन watch this space for the summer. Let's see. अभी still early days. अभी के लिए Ronald Araujo है बारसा में ही for sure. लेकिन क्रिश्चियनसन से ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे रोनाल्ड अराओ से, सो इसलिए आई थिंक दिस न्यूज इज कमिंग. इट माइट बी रॉन्ग टोटली, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न एटलीस्ट आर कीपिंग टैब्स. अनिमेश दाओ द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, क्या हाल है मेरे भाई?
आई थिंक अभी के लिए तो डेफिनेटली वो नहीं जाएगा, 100% अग्रीड। अगेन यश, आपने स्पैम किया मेरे भाई, इसलिए नहीं ले रहा, आपको शाउट आउट दिया फिर भी, आई होप यू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट। लेकिन हाँ, यहाँ पर भाई एक और बंदा जो चेल्सी से बहुत लिंक हुआ है, उसके नंबर्स आपको दिखा देते हैं। कमिंग बैक टू चेल्सी फॉर अ सेकंड, व्हाट अबाउट इंजरी प्रोन, 1 मिनट मोटिवेशन बोल रहे हैं, लेकिन वर्थ इट तो है यार डेफिनेटली मेरे ख्याल से। भाई ये विक्टर ग्योकरेश गाइस, 100 मिलियन। फेब्रिशियो ने बोला है दैट विक्टर ग्योकरेश इज नॉट मूविंग एनीवेयर, लेकिन उसके नंबर आप देखो, मतलब कंसिडरिंग दैट अगर ऑजीमैन क्लियर मना कर रहा है, क्योंकि रियल मैड्रिड अभी भी आर इन टू माइंड्स बिटवीन एम्बापे एंड ऑजीमैन, तो अगर बाय चांस ऑजीमैन कमिट नहीं करता है, मिकेल को मना कर देता है, जो ट्राई कर रहा है ऑजीमैन को स्काउट करने की, अलोंग विद लेट्स सी व्हाट हैपेंस द मैनेजरियल स्टिंट ऑफ चेल्सी, तब आप शायद पैनिक करोगे इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। आई फील वी माइट जस्ट पैनिक। ऑजीमैन अभी के लिए एनीवे, बट वी वांटेड टू प्री साइन हिम ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग द समर। अभी अगर वो नहीं करता है, विच इज क्वाइट अनलाइकली एनीवे, तो विक्टर ग्योकरेश अभी भी वी आर इंटरेस्टेड एज पर द न्यूज। उसके नंबर्स तो भाई यू कैन आर्ग्यू दैट इज डेफिनेटली बेटर देन मच बेटर देन निकोलस जैक्सन, बट अगेन ऐसा नहीं कि बहुत यंग है, बट यंगिश तो है, आई डोंट नो। Gyökeres is a star. We can see how he plays, but please not Santiago Jimenez. Santiago Jimenez, by the way, Arsenal are keeping tabs. Huh? Arsenal are keeping tabs. भाई Arsenal कौन सा स्ट्राइकर जाना चाहिए? Let me know that. Arsenal, what do you think? Which striker go? I think Borja Mayoral, the Getafe striker, जो आई थिंक 14 गोल मार दिया इस सीजन में ऑलरेडी इन ऑल कॉम्पिटिशंस। बोरहा मायोराल इज द वन स्पेनिश 26-year-old striker है। He has been linked to Arsenal. Santiago Jimenez has been linked to Arsenal from Feyenoord, of course, जहां पर वेस्ट हैम भी इंटरेस्ट दिखा रही है। आइवन टोनी, ऑफ कोर्स, लेकिन वो आइवन टोनी लग रहा है he'll be loyal to Brentford and not move. Joshua Zirkzee, Bologna striker, who basically Arsenal and Manchester United are going for 50 million का अराउंड सुनने में आ रहा था। there's a clause, but no, that clause is only for Bayern Munich because he was the next Bayern Munich player, remember that. They have a buyback close to 50 million pounds. Bayern Munich तो नहीं लेगी क्योंकि वहां पर हैरी केन है, ऑलरेडी दे हैव मैथायस चेल, सो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग फॉर जोशुआ ज़र्क्ज़ी। लेकिन आई थिंक आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वाइट पॉसिबली हो सकता है। अगेन जोशुआ ज़र्क्ज़ी बायर्न म्यूनिख यूथ टीम में था जहां पर टेन हाग भी थे, रिमेंबर दैट। व्लाहोविच, ऑल्दो बहुत लिंक्स आ रहे हैं वापस आर्सेनल के, आई डोंट सी यूवेंटस आर लेटिंग हिम गो एनी टाइम सून, क्योंकि सेरिया स्कूडेटो दे आर लिटरली फाइटिंग विद इंटर मिलान। लेकिन नॉट जस्ट दैट, आर्सेनल आर आल्सो शोइंग टैब, जैसे चेल्सी, जैसे इन मिडफील्ड अमडू ओनाना एवर्टन से। रिमेंबर एवर्टन के साथ आया है अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई, दे माइट अगेन गेट पॉइंट्स डिडक्टेड, ऑलरेडी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग एवर्टन और नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए। एवर्टन का अगर हो जाता है, दे माइट बी फोर्स्ड टू सेल अमडू ओनाना अभी, अनलेस बेसिकली उसका फॉर्म चल जाए। तो आर्सेनल एंड चेल्सी बोथ आर इंटरेस्टेड, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होगा। जुबीमेंडी अगेन वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन वर्मीरन आई थिंक इज अ पॉसिबिलिटी इन मिडफील्ड। इन डिफेंस, जोरल हाटो इज द गाय, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक फ्रॉम अयाक्स, यंगस्टर जो आर्सेनल जा सकती टू रिप्लेस किवियोर, क्वाइट पॉसिबली इन माय ओपिनियन। लेकिन हाँ, डियो मांडे, चेल्सी आर्सेनल दोनों जा रही है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मेरा टेबल तोड़ दिया हुआ है, सॉरी गाइस। भाई अगेन जो भी लोग यहाँ पर है, क्विकली लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को भाई, 1.5 घंटे का स्ट्रीम है। ग्रेट फन टॉकिंग टू यू ऑल फॉर ऑल द ट्रांसफर्स। आई एम कमिंग टू कपल ऑफ कमेंट्स भी, लेकिन बाय द वे लेनी ओरो, आई रिपीट, मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल भी जा रही है, नॉट जस्ट पीएसजी रियल मैड्रिड। लेकिन हाँ, न्यूकासल ऑन द अदर हैंड, सुनने में आ रहा है, उड़ती उड़ती खबर है, न्यूकासल हैव टू सेल ब्रूनो गुमारेश, लिवरपूल चेल्सी आर इंटरेस्टेड, बार्सिलोना आर इंटरेस्टेड, लेकिन भाई बहुत एक्सपेंसिव होगा भाई, उसका रिलीज क्लॉज ऑलमोस्ट 100 मिलियन पाउंड है ब्रूनो गुमारेश का, तो कहीं नहीं जा रहा है। एटलीस्ट चेल्सी तो वापस 100 मिलियन मिडफील्डर में नहीं स्पेंड कर रही है, आई राइट यू एंड गिव यू दैट, ठीक है। कैल्विन फिलिप्स लेकिन आ सकता है अभी भी, दैट्स व्हाट द न्यूज इज। लेकिन ऑन लोन पॉसिबली, जो बाय द वे स्पर्स से रेगुलर भी जा सकता है टू ब्रेंटफोर्ड, एंड बाय द वे स्पर्स अगर कॉनर गैलेगर नहीं जाता है, जो अभी भी उड़ती उड़ती खबर आ रही है खाली यार, ही इज मोर चेल्सी देन स्पर्स, होपफुली यस, तो जाओ गोमेज इज द बैकअप। जाओ गोमेज इज अ 23-year-old वुल्व्स सेंट्रल मिडफील्डर जो खेल रहा है ऑलरेडी बहुत मिनट्स इन द प्रीमियर लीग। गाइस आप देखते हो प्रीमियर लीग वॉचर्स। अगेन सिद्धार्थ, थैंक्स मैन, ऑलवेज वी ट्राई एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, जितना भी हो सके। एट द एंड ऑफ द डे भाई,
अंदर बहुत रहता है बात करने की, तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई ओपन द चैनल एंड अगेन फाउंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैम इन यू गाइस व्हिच ऑलवेज स्टेज प्लीज नो मोर यंग पोटेंशियल प्लेयर्स लेकिन विलियन जो है ना, मेसिनियो, ही इज वन ऑफ दोस ग्रेट ग्रेट प्लेयर्स पोटेंशियली, ये तो आई थिंक इज वर्थ इट इन माय ओपिनियन मेरे भाई। एज मच एज गैब्रियल है हमारे पास उस साइड में, मोरेरा है, मडवेके है, वी हैव बेसिकली मुड्रिक, अ लॉट ऑफ विंगर्स वी हैव, यंग गाइस राइट, उमारी हचिंसन है, बट आई थिंक कैंड्री पाइस भी खेल सकता है वहां पर, लेकिन आई फील मेसिनियो इज अ नो ब्रेनर, मैं तो जाना चाहूंगा उसके लिए एज अ यू नो एक्सेप्शन ओनली। आई नो एंटोनियो नूसा के साथ भी हम लिंक थे पुदिन, चेल्सी, दैट इज नाइजीरियन डिसेंट वाला बंदा है जो नॉर्वे का internationally already with Haaland he plays, remember, but I don't think I'll go with him. I'd rather go with Willian, who's Messinho, लेकिन let's see, मतलब I don't think वो starting 11 में हम लोग लाएंगे अभी right now, maybe he'll be loaned initially, but हाँ चेल्सी के बारे में end करते भाई, full back who can play either side, Kyle Walker-Peters, how's that? Kyle Walker-Peters getting linked. Manchester United fans गुस्सा मत होना, लेकिन there is some couple of sources saying that Luke Shaw, who's a Chelsea fan long time से, he wants to come to Chelsea and Chelsea want to go for Luke Shaw। नहीं होने वाला, डायरेक्टली मैं बोलता हूँ नहीं होने वाला, वो ऐसी अफवाह है। लेकिन काइल वॉकर पीटर्स, आइवन टोनी बोल रहे हैं अनिमेश, तो काइल वॉकर पीटर्स, AD in the house people, AD do check out AD744 as well, yeah he is, लेकिन he can be a future cam, Cole Palmer, Kendry Pies and Messinho, just imagine, I know FIFA नहीं है but just saying, I do think Nusa has great potential than Mudryk, हाँ Mudryk से better हो सकता है potentially, लेकिन Messinho probably is the guy who's supposed to be that, again बात ही कर रहे हैं, लेकिन he's supposed to be that, he's called Messinho for a reason, सुरेंद्र समझ जाओ बस। Why Ivan Toney is so hype man, that's literally he's not hype, लेकिन प्रीमियर लीग में proven striker है ना, very less proven striker था प्रोमोदरी, या इंजरी प्रोन है, प्लस वो आने नहीं वाला 100%, लेकिन हाँ ये इंटरेस्टिंग रहेगा। काइल वॉकर पीटर्स गाइस, आई नो साउथहैम्पटन आर एक्चुअली ट्राइंग फॉर अ चैंपियनशिप क्राउन दिस टाइम, और अच्छा कर रहा है बंदा, और आई नो स्पर्स हैव अ बाय बैक काइल वॉकर पीटर्स के लिए एज ऑफ जनवरी, लेकिन आई थिंक काइल वॉकर पीटर्स आई वुड टेक हिम कंसिडरिंग गुस्तो थोड़ा इंजरी प्रोन है, ही इज ओनली राइट बैक। Kyle Walker-Peters, I think, arguably is giving good competition to Malo Gusto as well up until Reece James comes. So मैं तो लूंगा लोन पर Kyle Walker-Peters on loan. I think this should be done. By the way, talking about people on loan, by Trevor Chalobah looks like it is leaving Chelsea this week. May it will be confirmed. लेकिन सुनने में आ रहा है Napoli are interested in him. जहां पर उसका भाई गया था भाई, someone who won the Premier League 2017 में, Nathaniel Chalobah, one guy whom I always wanted to do well in Chelsea. उस Nathaniel Chalobah, Luis Baker, Nathan Aki, Christensen, Ruben Loftus-Cheek, Dominic Solanke, ये लोग, पैट्रिक बैमफोर्ड, सब साथ में खेलते थे भाई। That time I remember I thought that these are guys who will be all Chelsea legends at some point, but ठीक है, that's what happens। लेकिन Trevor Chalobah is also going again, lucky enough to meet him last Diwali, but क्या कर सकते हैं, that is कलयुग भाई, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, can't do anything, that's how it goes sometimes। तो विश हिम ऑल द बेस्ट, लगता है वो जाने वाला है, या बारसा आर इंटरेस्टेड, लेकिन बारसा के पास अनफॉर्चुनेटली 60 मिलियन है ही ना अभी देने के लिए, अनलेस राइट अवे आप रफीनिया को बेचो। इस काइल वॉकर पीटर्स स्पर्स रिजेक्ट, टेक्निकली यस, बट आई थिंक प्रीमियर लीग में काफी प्रूवन है, अच्छा किया है बंदा। Dybala, I don't see moving anywhere. By the way, just to let you all know, Praneeth and everyone else, Dybala का जो रिलीज क्लॉज है ना, वो खत्म हो गया अभी के लिए, अभी वापस एक्टिवेट होगा ना समर में, तो 16 जनवरी तक था, आज ही होना था, अगर होना था तो वो खत्म हो गया। या फेयर पॉइंट यहाँ पर। ऑजी मैन टू आर्सेनल तो नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट सी दैट हैपनिंग, बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट गाइस, जो भी लोग देख रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू दैट लाइक बटन, 200 लाइक्स होने चाहिए, कितने लाइक्स हुए भाई, लेट अस नो इन द चैट, वी नीड टू गेट टू 200 लाइक्स, एंड हैज एवरीवन हियर सब्सक्राइब्ड, hit that bell icon please, definitely helps, आपको पता लगेगा whenever you're live or putting a video, but not just on Almighty Blues, also on Almighty Sports, नीचे link है always, also you can write me if you're not doing it, big up to you all, come on भाई, सपने मत दिखाए, लेकिन all the best, bye।